Good evening, everyone, and a very warm welcome on behalf of ANHAD and NAPM, National Alliance of People's Movements, to today's webinar, which is on the restless struggle, and we are focusing on the accountability of institutions. There are several laws in the country, many of which are very hard fought. They required a long struggle, after which these laws came to protect women, to protect children against sexual harassment, against any kind of sexual exploitation. And there is a host of institutions in the country that are supposed to ensure that women, children, people can live a life of dignity and do not have to face sexual harassment. And if there are allegations of sexual harassment, these laws immediately kick in and action is taken promptly. What we are seeing for the past many months now and unfolding on the streets, but also on different media, some of which have been very concerning sort of reports, is that there has been very grave allegations of sexual misconduct, of sexual harassment by the president, the erstwhile president of the Wrestling Federation, Brij Bhushan Singh, Sharan Singh, by the wrestlers of our country, where they have said that there was sexual harassment. They have gone on, they have in fact had no choice but to hit the streets, to sit on protests, to just demand that there be investigation in these matters of allegations of sexual harassment by Brij Bhushan. In January, that was the first time we heard of this publicly. And of course, the government then said that they will set up a committee. Now, there is supposed to be an internal complaints committee, but from what we understand, there is no such committee in the Wrestling Federation. And these wrestlers who were complaining, who have been complaining of sexual harassment, basically had to come to the streets and demand that there be investigation into their complaints. The government, of course, we all know, quickly said that they should get up and that there will be a committee that would be set up. And a committee was set up, the report of which was not made public, but we heard through media leaks that it gave a clean chit to Brij Bhushan Sharan Singh. The wrestlers then have again sat on a sit-in. They have again been protesting. They came to Jantar Mantar again on the 5th of April, after the 5th of April, when the committee submitted its report. They sat again on the 23rd of April. There are 7 complainants, including a minor. No FIR was being filed. It was only when they approached the Supreme Court and the court intervened that an FIR was filed. And we know that how quickly FIRs are filed in certain cases, but in this particular case, the Delhi police did not file an FIR till the matter reached the Supreme Court. 2 FIRs, of course, were subsequently filed. And again, the wrestlers sat in their protest, saying that they want Brij Bhushan to be arrested because there was fear of intimidation, of evidence tampering, since he is a member of parliament. He's a very powerful individual. He was also the head of the Wrestling Federation, but no arrest was made. And we saw the way in which the wrestlers were handled when they wanted to march to the parliament, when the new parliament building, which glorifies our democracy, was being inaugurated. The wrestlers wanted to protest, and the way they were handled by the police was something that left left a very deep impression, I think, on all those who saw those visuals of how they were brutally attacked and they were manhandled. We have today with us a very, very senior panel that comprises people who have been looking at the role of institutions, demanding that there be appropriate laws and that there be institutions that come in and act against
these kind of acts of sexual harassment. We will be hearing from them. We want them to talk to us today about where we feel that institutions have failed the wrestlers and therefore all of us as citizens, because this is not something that concerns just those few wrestlers, those several complainants. I think any woman, any child, any person in this country who believes in justice is extremely aggrieved today. And we want to understand how is it that institutions have failed. The police, the Delhi police, the judiciary, the Supreme Court, where this matter was taken up, where the wrestlers had hoped that there will be some monitoring from the courts. There are many other institutions, the NCPCR, which is supposed to protect child rights, the National Commission for Women. How have they fared? What are the laws? How have these institutions fared is something that we hope to hear from our panel today. आज हमारे साथ लोग हैं जो कि केवल अंग्रेजी में और कुछ लोग हैं जो केवल हिंदी समझते हैं, तो मैं बहुत संक्षिप्त में हिंदी में भी अपनी बात रखूंगी और मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक किसी भाषा में अपनी बात रखें जिससे कि मैं उसको ट्रांसलेट कर सकूं दूसरी भाषा में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अनहद और NAPM की ओर से आज की डिस्कशन में। जो रेसलर्स का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं और जो स्पेशल फोकस है वो हमारी संस्थाओं की जवाबदेही पर है। हम जानते हैं कि बहुत सारे कानून हैं और संस्थाएं हैं जिनका काम है कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट की, यौन उत्पीड़न की कोई एलिगेशंस आती हैं, शिकायतें आती हैं, उन पर कैसे काम किया जाए और क्या काम किया जाए और किस स्पीड से काम होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि जिन संस्थाओं को अपना काम करना था उन्होंने नहीं किया, तो जो रेसलर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो इतने दिनों से उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा है जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। और क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने शिकायत की है, यौन उत्पीड़न हुआ है और हमने शिकायत की है, उसके ऊपर काम हो, उसके ऊपर तुरंत जांच हो। FIR तक नहीं किया जा रहा था जब तक सुप्रीम कोर्ट तक बात नहीं गई, और जब उच्चतम न्यायालय बात पहुंची तब जाकर दिल्ली पुलिस ने FIR किया। उसके बाद भी अरेस्ट नहीं किया गया ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह को, जो कि रेसलिंग फेडरेशन के मुखिया थे उस समय पर और जो कि मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, सांसद हैं, तो बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी हैं। और लगातार जो है रेसलर्स को ये कहते रहना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा कि आप इनको अरेस्ट करिए, क्योंकि ये तो एविडेंस के साथ भी टैंपर कर सकते हैं, ये तो डरा धमका भी सकते हैं। और हमने देखा है कि सारी तमाम चीजें होती भी नजर आई हैं, हमें सुनने को भी मिली है मीडिया में। क्या दिल्ली पुलिस का रोल सही था? जवाबदेही होनी चाहिए। क्या जुडिशरी, कोर्ट्स जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, उनका रोल क्या कुछ अलग होना चाहिए था? क्या ऐसी संस्थाएं जिनका काम है कि वो बच्चों की सुरक्षा करें, यौन उत्पीड़न से उन्हें अगर कोई समस्या हो तो उस पर तुरंत एक्ट करें, NCPCR जैसी संस्था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो महिला आयोग है, उनका क्या रोल है और रहा है? और हमें इन सब चीजों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ पैनल है जो कि बहुत समय से इन सब मुद्दों को देखते आए हैं, इनके साथ जूझते आए हैं और इनसे एंगेज करते आए हैं। और आज हम उनसे उनकी डिस्कशन में बात सुनेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी जस्टिस लोकुर को, जस्टिस मदन लोकुर को हम सभी लोग जानते हैं, वो कोर्ट के अंदर भी लोगों के हकों की आवाज उठाते रहे, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस लोकुर, और रिटायरमेंट के बाद भी जस्टिस लोकुर लगातार
जो न्याय, जहां पर भी वो अन्याय होता देखते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो तमाम मूवमेंट्स हैं उनके साथ खड़े होकर, लोगों के साथ खड़े होकर न्याय की आवाज उठाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस लोकुर हमें आज ज्वाइन करने के लिए। आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट जस्टिस लोकुर. We all know Justice Lokur. He needs no introduction. He was a judge of the Supreme Court of India, and he has joined us today. We have requested him to please talk to us about the accountability of institutions, especially the role of the Delhi police, the judiciary, and the other institutions. Justice Lokur, in the next 20 minutes, if I may please request you to put forth your views. I would like to divide my presentation into three aspects. One is the protest which started in Janta Lokur from sometime in January this year to about 16th of April, when the report set up by the committee is supposed to have been given. Now, and the second, of course, is from the 23rd April onwards, when the protest restarted, up to sometime in May, when about a month had gone by and nothing had happened. And then, there was this candlelight march, which is the third section. And then what happened on the 28th of May? And what are the developments since then? Now, so far as the first aspect is concerned, namely when the protest started in January, it's not that, the wrestlers decided that let's go and have some kind of a protest in Janta Lokur. Obviously, there would have been something prior to that, all right? Because this sexual harassment is not something which started only in January. It started much earlier. They would have made complaints, but it appears that there is no internal complaints committee in the Wrestling Federation. So, which is contrary to the law, by the way, the Sexual Harassment Act. And because there was no place to whom they could make a complaint, it seems they either made a complaint to some persons who are officials in the Wrestling Federation. And it also appears that they made a complaint to the Ministry of Sports, which is in charge of the Wrestling Federation and other sports federations and organizations. Nothing seems to have happened, absolutely nothing, which is what drove them to come to Janta Lokur and to, go on some sort of a protest. Now, one of the things that was said against these wrestlers is, oh, why did you go to the streets? Now, obviously, they had no option. There is no ICC, there is no internal complaints committee, so they could not go there. They seem to have gone to the Ministry of Sports, or at least to some persons in authority. There was no response, so they had no other option but to come to Janta Lokur to protest. Now, while they were there, the protest started, I think, sometime on the 18th of January. And on 21st of January, they called off the protest because they were given an assurance that two committees will be set up. One committee will be set up with regard to the affairs of the Wrestling Federation, and the second committee will be set up to examine the allegations that they have made. Now, obviously, the allegations had been made, right? So to say that, oh, why did they come to the streets? They should have done this, they should have done that. To me, it makes no sense. Anyway, the oversight committee was constituted on the 23rd of January. And it was required to give its report within 1 month. It did not give the report within 1 month. Time was extended. And eventually, on 16th of April, the report was given by the Oversight Committee. What are the contents of the Oversight Committee's report? Nobody knows, right? It's a big secret, all right? Now, why is it a big secret? I mean, there is something that has happened. And the only thing that can be assumed, as lawyers put it, you can draw an adverse presumption. If the report was in favor of the accused person, the person who is supposed to have sexually harassed the wrestlers,
the first thing to do would be, make the report public. All right, delete the names and so on and so forth, redact it, and make the report public. So I think the first presumption is that the report is against the person in charge of the wrestling federation, the person against whom allegations have been made. So let's proceed on that basis. Otherwise, the whole thing, I think, would have just come to an end if he had been found not guilty, or if the wrestlers had been told, if the committee had found that the wrestlers are, making false allegations and so on. Then you come to the second stage. The wrestlers obviously came to know that the report has been submitted. It was not being made public. They said, make the report public. And the executive or the government or whoever is in charge, they said, no, we're not going to make the report public. So this again drove them to come to Jantar Mantar, where they came on the 23rd of April to protest and say that, why are you not making the report public? Right? That is one. Second, they had made a complaint. Why is an FIR not being registered? That was the second grievance. So they came out with two grievances. One, make the report public. Two, register an FIR. Now, if the report was in favor of the accused and against the wrestlers, they would have said, listen, here is the report. And where is the question of registering an FIR? We're not going to register an FIR because there's nothing in the complaint that you have lodged. It's all false. But they did nothing. Now, this drove the wrestlers to approach the Supreme Court for an exercise of their fundamental rights under Article 32 of the Constitution of India, to say that, listen, here is a cognizable offense. Why is an FIR not being registered? The matter came up before the Supreme Court, I think on the 25th. Supreme Court issued notice to Delhi police on the 28th. And the Delhi police then comes out very magnanimously and says, oh, we have received this complaint. Now we are going to register an FIR. I think the Supreme Court should have first of all asked them, why didn't you register an FIR much earlier? What is the point of telling us today, after the matter is before us, that we are going to register an FIR? Anyway, the Supreme Court did not do that. And it was told to the Supreme Court that there is a fear of threat, a fear to the life of the wrestlers. I think an affidavit was also filed in a sealed cover to the Supreme Court to say that, listen, this is why, I assume, to say that this is why we think that there is a threat to our lives. The matter was then taken up by the Supreme Court on the 4th of May. And on the 4th of May, the Supreme Court was told that an FIR has been lodged. It was lodged on 28th of April, which means that there was some substance in the complaint. And the FIR dealt with three things, apart from, harassment. It talked about sexual harassment under section 374A. It talked about stalking, which is again a very serious offense under section 374D. And because there was a minor involved who had been sexually harassed, molested, a case under section 10 of the POCSO, Prevention of Child Sexual Abuse Act, was also registered. Now, that section 10 is not just sexual assault, it is aggravated sexual assault. So you can imagine the seriousness of this. That's one thing. The second is that the Supreme Court said that these wrestlers should be given police protection, which means that the threat perception or the threat which they had indicated to the Supreme Court was perhaps real. Otherwise, the Supreme Court would not have said that, listen, give them police protection. So the whole thing indicates, number one, that the Delhi police was going slow for reasons which I think are fairly obvious. Number two, that these wrestlers were under threat. And the Supreme Court accepted the fact that they were under threat. And that's why they said you give
these wrestlers police protection. Now, before the hearing on the 4th of May, if you remember, on the 3rd of May and on the night of the 3rd of May, there was some sort of a scuffle that took place at Janta, where these wrestlers said that some policemen or maybe some persons, whoever it is, they were drunk, they came and they tried to, manhandle them, and some sort of a ruckus took place. Which means that an incident did occur, which also I think the Supreme Court must have been aware of, because it seems to have come out in the newspapers. In any case, on the basis of the affidavit, the Supreme Court came to the conclusion that there was a threat. So in this background, I think the Supreme Court should not have said that, listen, if there is anything further, then you go to the High Court or you go to the jurisdictional magistrate. The Supreme Court should have said that we are convinced, number one, that you have delayed in lodging an FIR, which is something you should have done, particularly in a case of aggravated sexual assault. Second, there is a threat perception, and we think that these wrestlers must be given police protection. So we'd like to monitor the investigation so that things don't go wrong. Now, the Supreme Court has in the past monitored investigations, not with a view to see that, the person against whom the case has been filed is convicted. No. The Supreme Court has monitored investigations only to see that things don't go wrong. The investigating officer or the police do not go off at a tangent. Now, if there's some politically connected, well-connected person like you had in the Jain Hawala case in the 1990s, Supreme Court said, yeah, we'll monitor it, right? Because some big names are involved and, the whole investigation might get derailed. Or in some other matter, because of the nature of the case, because of the nature of the persons, the Supreme Court monitors the investigation only to see that it doesn't get derailed. I think there, the Supreme Court, in my view, did not fully appreciate the position and decided not to, monitor the investigation. I think they should have. All right. Then we come to the third section. When the wrestlers went back, they were continuing in Jantar Mantar. I don't know what kind of investigations were going on. But on 23rd of May, they took out a peaceful candlelight march in which it was pointed out that, listen, we've been here for 1 month. From 23rd of April, we've been here. 1 month has gone by. And what has happened? It's not something, which requires massive investigations and all that. And later on, it came on, police, talked to about 100 witnesses. What is there to talk to 100 witnesses? It's not that, there was a whole crowd that was watching the sexual harassment of these girls, including the minor, and so therefore you need eyewitnesses. Now the police says, we need video evidence, we need audio evidence. What's going on? These kind of things don't happen in, on the street, Sexual harassment of wrestlers. People don't do that on the street. Obviously, it is done behind closed doors. And what kind of evidence are you going to get? That's what the investigation is for. Otherwise, then why have an investigation? Here is all the material, prosecute the fellow and send him to jail. That's it. End of the matter. Why have an investigation? Anyway, then after this, 23rd May candlelight march, we had this really ugly scenes on the 28th of May when the wrestlers were manhandled. It's not that only they were manhandled, but criminal allegations were made against them, including of rioting. Right? And that complaint of rioting has not been withdrawn. Theoretically, therefore, these wrestlers are now accused persons accused of rioting. Okay, so somebody who came to Jantar Mantar, came to the Supreme Court,
as victims of crime, have now been told that, oh, you are actually the criminals, right? You have done rioting, you've done, broken the law, section 144, this, that, and the other. Look at the, turn of events. Look at the somersault that has taken place. Now, from 28th May onwards, okay, then they were told that, listen, now you can't even come to Jantar Mantar. Okay, whatever bedding that you had over there, whatever tents that you had over there, everything is taken away. Okay, so now there's no internal complaints committee, so you can't complain to them. They probably went to the government, nothing has happened. They went to the police said you can't come and protest over here. Now, where are they supposed to go? What are they supposed to do? Are they again supposed to go to court and say that, listen, this is what is happening to us? It's quite obvious, that the police is mixed up. They don't want the allegations to proceed. They don't want the investigation to proceed. Now we come to what has been happening in the recent past. What surprised me considerably was the Honorable Minister giving an assurance to the wrestlers when they said that we are going to throw our medals into the Ganga. And in fact, they actually went to throw the medals into the Ganga. They were told that, oh, you see, so the probe will be completed by 15th of June. All right, so don't do anything. How did the Honorable Minister come to know that it will be completed by the 15th of June? The only person who can answer that question, or the only person who can make that statement, is the investigating officer, nobody else. At best, the investigating officer can tell his superior, the Commissioner of Police, that, listen, I'm supposed to report to you. I will complete the investigation by 15th of June and I will file a charge sheet. Nobody else can do that. So therefore, there is something that is going on, behind the scenes. I remember, now, why is this serious? This is serious because the Supreme Court has said in any number of judgments that nobody can interfere in investigations, not even the Supreme Court. That's why when the Supreme Court monitors the investigation, they don't interfere in the investigation. They just let the investigating officer do what he's supposed to do. But if he's doing something ridiculous, going off at a tangent, then they say, listen, we think you're going off at a tangent. So now what I remember is when this, scam was going on about the allotment of poll blocks. The CBI was asked to file an affidavit. The CBI prepared an affidavit and they showed it to the then Law Minister, Mr. Ashwini Kumar, who vetted it. Now, he had nothing to do with the investigation. The investigation was with the CBI. It was brought to the notice of the Supreme Court that the affidavit was vetted by the Law Minister. The Supreme Court came down pretty heavily on the Law Minister, and the Law Minister resigned. Why? Because through the process of vetting the affidavit, he had interfered in the investigation. Now here, it appears that there is something going on behind the scenes. Otherwise, how would somebody know that the probe is going to be over on the 15th? And why should somebody tell anybody else? Why should the investigating officer tell anybody that, listen, I'm going to complete it by the 15th? What business does anybody else have except perhaps a police commissioner? So I think this needs investigation. What is it that has been going on behind the scenes? Of course, nobody will investigate this, but it is something which I think is disconcerting, to say the least, keeping in mind the fact that the Law Minister had at one point of time to resign and as the Law Minister and the case pending in the Supreme Court, one could say that, listen, he's a Law Minister. Why can't he, have a look? And the matter is pending in the Supreme Court. But the Supreme Court said, no, you can't do it. Right? Okay. So one is, it appears, and it needs investigation, whether there is some interference in the investigation process. Then you have this minor,
I think this minor was examined by the police in the presence of 4 women constables. This seems to have come out in the newspaper, I think today or yesterday, for about 4.5 or 5 hours till 9:30 p.m. Where was the need to interrogate her or to examine her or whatever they did for 4.5 or 5 hours? I mean, she's given a statement. That statement is in writing. That statement forms the FIR. What kind of investigation do you want? Okay, then this is an aspect of re-victimization. That you have said this, now prove what you have said. That is what re-victimization is all about. And the Supreme Court and all the courts actually have come down very heavily against re-victimization, where a woman is sent to the witness box and asked all kinds of questions. Supreme Court says you can't do it. You're re-victimizing the person. Now here with this interrogation going on for 4.5 or 5 hours, it is nothing short of re-victimization. It appears to me that the purpose of all this, now they say, oh, we want to examine some people or we want to get evidence from some foreign country, right? Because allegations were made that this thing happened in Kazakhstan or Kyrgyzstan or, some of these countries. We want information from there. First of all, I don't know whether they're going to get it by the 15th. That's the day after tomorrow. Okay, so the assurance has no meaning. And what information are these guys going to give? Was this happening in public? This sexual assault, stalking, was it happening in public? And do you think those federations over there have got nothing better to do but to find out what is going on? I mean, this is ridiculous. Then they take one of the persons to the scene of crime, or the so-called scene of crime, to the office. Why? The scene of crime is the person. It is her bodily integrity which has been tampered with. She is the scene of crime. And she says, this is what has happened to me. And you say, no, I want to know where it has happened to you. Which place? What else is re-victimization? Where did it happen? How did it happen? When did it happen? Which part of your body did they touch? Can you please demonstrate? I mean, what is this going on? This is a clear case of re-victimization. Okay, then, now, the wrestlers have come out. They've said that we are under pressure. It's fairly obvious with all these things that have been happening in the background that they're under pressure. The Supreme Court has said that there's a threat perception, give them police security. Obviously, they're under pressure. And now this minor has been, or at least her father who made the complaint, has been told to, say something or the other. God knows what he has said. It's not very clear what he has said. But why? Why should that happen? She made a statement under Section 164 before a magistrate. Why don't you go on the basis of that? And you need, people in foreign countries to tell you what is happening. So rather than investigate into the offense that has taken place, the investigation seems to be directed towards showing that the accused is innocent. And that all of you, all the wrestlers, 7, 8 of them, including the minor, are saying something false. Nothing has happened. That seems to be the purpose of the investigation. Investigations have to be unbiased. They have to be fair. Investigations cannot take place when persons are under threat. But all this is going on. And I'm sure Vrinda and Shahrukh will tell you that with this background, any defense lawyer can shred the case to pieces. Assuming the matter goes to court, with this background, any defense lawyer worth his or her salt will be able to say that, listen, there's something funny going on, and this person is either not guilty
or is entitled to the benefit of doubt. And that's the end of the story. So we are now looking at something, a very strange situation where it appears to me that what is going to happen is a foregone conclusion. There is talk about, why hasn't this person been arrested? Okay, first of all, it's a very serious offense, aggravated sexual assault. It's a very serious offense. It's not a minor offense. Number one. Number two, the person is powerful. That is pretty obvious. Otherwise, he would have been arrested a long time back. He's going around making speeches, He's coming on TV and saying, I'm not done anything. I'll hang myself if something is proved against me. He was going to have some Mahapanchayat or something, God knows what. And they said, no, cancel it. So he is a very powerful person, very well connected. There is evidence to show that witnesses have been threatened, may not be by him, but by persons known to him, or some persons who are interested in threatening the witnesses, apparently on his behalf. Evidence is being tampered with. The very fact that this minor or her father has gone back on the statement to some extent is an indication that evidence is being tampered with. Flight risk? Probably not. It's unlikely that he's going to run away, but then as we have seen in the recent past, in the last couple of years, a person who doesn't even have a passport is arrested on the ground that he's a flight risk. Where is that person going to go if he doesn't even have a passport, right? And very highly respected persons, former ministers, have been arrested. They're not flight risks. So flight risk is, neither here nor there in a situation like this. So you have tampering of evidence, evident. You have, in a sense, suborning witnesses or threatening them at least. You have a very serious offense of aggravated sexual assault, apart from stalking and sexual harassment of not one person, but I think 6 or 7 persons, and who have come out openly, right? Normally, you say, oh, the identity of this person should not be known. Even in the Supreme Court, they were described as XYZ. But they have come on camera to say that this is what has happened to us. So you can imagine the extent to which they have been harassed. Okay, all these things, you have to put them together, not look at an incident in isolation. Did this happen in Kyrgyzstan? Oh, it did not happen in Kyrgyzstan. Did it happen in Indonesia? I don't know. Maybe it happened in Indonesia. That's not the way you investigate a crime. Groping, did it happen with the left hand? Did it happen with the right hand? Did it happen in the morning? Did it happen in the afternoon? This is not the way to go about it. This is something which can be seen at the trial if it is necessary. But, well, what can I say on this? That's all. Thank you. थैंक यू वेरी मच जस्टिस लोकुर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं संक्षिप्त में जो जस्टिस लोकुर ने बातें कही और मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी और पावरफुल बातें जस्टिस लोकुर ने हमें बताई हैं, मैं हिंदी में अनुवाद कर देती हूँ। जस्टिस लोकुर ने बताया कि 3 हिस्सों में हम इस पूरी चीज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले में तो अगर हम देखें, जब जो रेसलर्स हैं वो जंतर मंतर पे आए जनवरी में, और जनवरी से अप्रैल तक जब तक की रिपोर्ट आई कमिटी की, उस भाग में अगर हम देखें कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि बहुत स्पष्ट है कि जो ये उत्पीड़न है, ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये जनवरी में इस साल तो शुरू नहीं हुआ, तो पहले हो रहा था। और ये भी बहुत स्पष्ट है कि इसके खिलाफ शिकायतें भी जो रेसलर्स हैं उन्होंने करी।
लेकिन कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी नहीं है, कोई ऐसी कमिटी नहीं है जहां पर रेसलिंग फेडरेशन के अंदर शिकायत की जा सके। तो उन्होंने कहाँ की होगी शिकायत, तो ये अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि या तो उन्होंने फेडरेशन के अंदर कुछ लोगों से या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में उन्होंने ये शिकायत करी होगी इस उत्पीड़न की, और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये सवाल लेकिन लगातार उठाया गया, और मैं जानती हूं कि भाषा इस पर बात करेंगी, लेकिन किस तरीके से मीडिया में ये सवाल लगातार उठाया गया। जस्टिस लोकुर ने कहा कि इन लोगों को सड़कों पर आने की क्या जरूरत थी, इस तरीके से प्रोटेस्ट करना की क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने कहा कि क्लियरली कुछ एक्शन नहीं हो रहा था और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सड़कों पर आने के लिए। फिर 2 कमेटियों का गठन की जरूरत थी। एक जो उनकी मांग थी वो यही थी कि 2 कमेटी का गठन हो। एक तो जो रेसलिंग फेडरेशन है उसके जो कामकाज है उसका जो रहा और उसका जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें देखे, और दूसरा जो एलिगेशंस आए जो उन्होंने कहा कि हमारे साथ हुआ उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करे, उस पर गौर करे। एक कमिटी सरकार ने सेटअप करी, ओवरसाइट कमिटी, जिसका काम था 1 महीने के अंदर, कहा गया कि वो रिपोर्ट अपनी देंगे, लेकिन वो रिपोर्ट 1 महीने में आई नहीं। पर जब रिपोर्ट आई और देर से आई, वो रिपोर्ट भी गोपनीय रखी गई, बताया नहीं गया कि उस रिपोर्ट में क्या है। उन्होंने कहा कि एक एडवर्स प्रिजम्पशन का अगर हम सोचें कि छुपाई कब जाती है चीज, वो तब छुपाई जाती है अगर उसमें लिखा हो कि कुछ गड़बड़ी हुई। तो अगर सरकार को लगता, जो कमिटी थी जो बनाई गई थी उसको लगता कि बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ गलत काम नहीं किया, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी ये कहने में कि हम क्लीन, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई। लेकिन जिस तरीके से उसे गोपनीय रखा गया उससे स्पष्ट होता है कि कमिटी को प्रॉब्लम्स नजर आई, जो शिकायतें हुई थी उसमें उन्हें दिखाई दिया कहीं पर कमिटी को कि सच है। फिर जस्टिस लोकुर ने कहा कि अगर हम दूसरे स्टेज में देखें कि क्या हुआ, फिर से आंदोलन पर, सड़कों पर बैठना पड़ा हमारे रेसलर्स को, और वो किस लिए बैठे, क्योंकि सवाल सीधा साधा है कि एफआईआर ही पुलिस दर्ज नहीं कर रही। इतना संगीन जुर्म का एलिगेशन है, लेकिन पुलिस जो है वो एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रही। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, कोई कारण नहीं है कि एफआईआर ना हो। और दूसरी चीज जो बहुत स्पष्ट रूप से हो रही थी वो ये कि रिपोर्ट किसी को भी बताया नहीं जा रहा था कि रिपोर्ट में कमेटी के क्या लिखा है। तो फिर से धरने पे बैठे और कोर्ट तक जाने में, सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर मजबूर हुए रेसलर्स, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में भी यही कहा कि हमारी जो शिकायत है, जो एफआईआर होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, दिल्ली पुलिस नहीं कर रही। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जान को, हमारी जीवन को एक खतरा है, थ्रेट टू लाइफ है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया और उसके बाद ही दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अब जो एफआईआर दिल्ली पुलिस ने फाइनली दर्ज की वो बहुत क्लियर है। उसके अंदर जो लिखा गया है उसमें सेक्सुअल हरासमेंट की बात है, यौन उत्पीड़न की बात है, स्टॉकिंग की, के पीछा करने की जो बात है वो लिखी गई है। और एक माइनर, जो एक 18 साल से उम्र के कम व्यक्ति पर, बच्ची पर जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट हुई, उत्पीड़न हुआ, वो पॉक्सो में एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की बात एफआईआर में लिखी है। तो मतलब जस्टिस लोकुर कह रहे हैं कि क्लियरली एफआईआर में जिस तरीके की धाराओं का इस्तेमाल हुआ है बहुत ही संगीन है। और सुप्रीम कोर्ट में ये फिर कहा गया कि अब तो एफआईआर दर्ज हो गई है, अब हम इस मामले में जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा तो अब कोई जरूरत नहीं है आगे इस मामले को बढ़ाने की। जस्टिस लोकुर ने बहुत हमें ये बताया क्लियरली कि इस ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को जरूरी था
कि वो दिल्ली पुलिस से सवाल करते, उन्हें जवाबदेह बनाते कि क्या जरूरत पड़ी, इतनी क्या मुसीबत थी कि आपने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया, क्या कारण था? ये कम से कम सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली पुलिस से पूछना चाहिए था। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही जरूरी बात है जो जस्टिस लोकुर ने कही है, क्योंकि जब हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं और हम लगातार कह रहे हैं कि आज हमारे देश में ऐसे संस्थाएं जिनका काम है जवाबदेही का, जिनका काम है हमारे अधिकारों का हनन रोकने का, वो अपना काम नहीं करते, तो अगर उन्हें जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा तो इस देश में न्याय की व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को सवाल पूछने चाहिए थे और जवाबदेह बनाना चाहिए था, वो नहीं किया। दूसरी चीज जो जस्टिस लोकुर ने कही, उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करनी थी, उससे एक रात पहले ही हमने सभी ने देखा, अपने टीवी स्क्रीन पे भी देखा, पढ़ा भी, कि किस तरीके से एक लड़ाई सी हुई, स्कफल हुआ जंतर मंतर पे, जहां पर पुलिस ने जो ये भी कहा गया कि कुछ लोग नशे में धुत थे और उन्होंने आकर जो रेसलर्स थे उनकी मारपीट करी, उनके साथ बुरा बर्ताव करा, उन्हें मैनहैंडल करा। और उन्होंने, जस्टिस लोकुर ने कहा कि ये सब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद जब ये बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को मॉनिटर करें, क्योंकि इसमें एक बहुत ही ताकतवर, पॉलिटिकली, राजनीतिकली ताकतवर इंसान इन्वॉल्व हैं, तो उस सुप्रीम कोर्ट ने वो करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, एफआईआर हो गई है, अब हम इसे और नहीं आगे ले जाएंगे इस केस के तहत। तो जस्टिस लोकुर ने ये भी बात उठाई कि जब इतना स्पष्ट समझ में आ रहा था कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, कि दिल्ली पुलिस का क्या रवैया है, वो कोर्ट तक लोग नहीं पहुंचे, तब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस, कितना थ्रेट बना हुआ है, कितना खतरा बना हुआ है ये जो रेसलर्स हैं उन पर। और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप इनको एक प्रोटेक्शन दीजिए क्योंकि इनकी जान पे खतरा है। तो अगर कोर्ट को ये नजर आ रहा था और उन्होंने ये सब सीन्स भी देखे कि किस तरह से उन पर अटैक हुआ जंतर मंतर में रात को, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या इस पूरे केस को, इस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर नहीं करना चाहिए था? तो जस्टिस लोकुर ने कहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है उस पर भी लाइट डाली है, रोशनी डाली है, क्योंकि यह जिस माहौल में रेसलर्स बैठे हैं और जिस तरीके का जो पावरफुल इंसान है जिसके खिलाफ एलिगेशंस हैं, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब कोर्ट ने कहा कि हम मॉनिटर नहीं करेंगे, वो एक बहुत गंभीर बात बन जाती है। और ऐसा नहीं है, जस्टिस लोकुर ने कहा कि पहले कभी कोर्ट ने कोई केस को मॉनिटर ना किया हो। बहुत केसेस होते हैं, स्पेशली जहां पर पॉलिटिकली पावरफुल लोग इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हम मॉनिटर करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें कोर्ट किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को चलाए या फिर कहें कि क्या उसमें निकलना चाहिए, पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही से चले, पटरी से ना उतरे, उसके लिए जरूरी होता है कई बार इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करना। और सुप्रीम कोर्ट ने वो करने से मना कर दिया, जिस पर जस्टिस लोकुर ने चिंता व्यक्त की है। तीसरा जो पूरा स्टेज रहा अभी तक रेसलर्स के प्रोटेस्ट का, जो 23 मई से अभी तक रहा है, जस्टिस लोकुर ने कहा कि 1 महीने तक कुछ भी जब नहीं हुआ, तब रेसलर्स को वापस आकर जंतर मंतर पर बैठना पड़ा और अपनी बात रखनी पड़ी। और उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, इन्वेस्टिगेशन क्या चल रही है, ऐसा क्या बड़ा केस है जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पुलिस कह रही है हम 100 से अधिक लोगों से बात कर चुके हैं, क्या ढूंढ रही है पुलिस, जबकि इतनी क्लियरली कंप्लेंट्स जा चुकी हैं पुलिस के पास। और 28 मई को जिस तरीके से
जब एक और नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उसी दिन साथ ही में जब रेसलर्स ने कहा कि हम शांतिपूर्वक तरीके से पार्लियामेंट तक चल के जाना चाहते हैं, हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया गया, किस तरीके के सीन हम सब लोगों ने देखे। तो जस्टिस लोकुर ने कहा कि ये तो बिल्कुल विक्टिम्स को परपेट्रेटर्स बना दिया गया। पुलिस ने किस तरीके से तुरंत एफआईआर फटाफट इस केस में दर्ज कर दिया, ये कहते हुए कि रेसलर्स राइटिंग कर रहे हैं और दंगे कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनको प्रताड़ित किया गया, जिनको जो यौन शोषण की शिकायत कर रहे हैं, उन्हें ही दोषी करार कर दिया गया एफआईआर्स में पुलिस के द्वारा। ये कह दिया गया कि ये तो दंगे फसाद कर रहे हैं। तो ये उनके टेंट हटा दिए गए, उनको प्रोटेस्ट करने से रोक दिया गया। तो अब ये लोग कहाँ जाएं, ये भी एक बड़ा सवाल हमारे लोकतंत्र में हम सबके सामने खड़ा है, जो कि जस्टिस लोकुर ने कहा। और जस्टिस लोकुर ने एक बहुत जरूरी चीज पर कहा कि सोचने की भी जरूरत है और उस केस में इन्वेस्टिगेशन होने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि मिनिस्टर जो हैं, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी सरलता से कह दिया रेसलर्स को बुलाकर भी कि आप जो हैं, आप अभी प्रोटेस्ट मत करिए, आप अपनी आवाज अभी मत उठाइए, क्योंकि 15 जून को ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है ये समाप्त हो जाएगी और तब जो है चार्जशीट फाइल हो जाएगी। तो जस्टिस लोकुर ने कहा कि मिनिस्टर को किसने बताई ये बात? केवल जो इन्वेस्टिगेट करते हैं ऑफिसर, पुलिस में लोग हैं, उन्हें ये बात मालूम हो सकती है कि कितना समय लगेगा। उनको भी क्लियरली डेट नहीं मालूम हो सकती कि कब तक हम खत्म कर देंगे सारा केस का इन्वेस्टिगेशन, हम कब तक खत्म करके चार्जशीट फाइल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में मिनिस्टर को कैसे मालूम पड़ रहा है? तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो पूरा मामला है इसमें पॉलिटिकल इंटरफियरेंस की बात हो रही है और ये जो मिनिस्टर हैं वो जान रहे हैं कि वो बता सकते हैं दिल्ली पुलिस को कि कब तक इसके अंदर केस जो चार्जशीट है वो फाइल होगी, कब तक ये खत्म होगा प्रोब। तो जस्टिस लोकुर ने कहा कि ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में ने खुद ऐसे मामलों में बहुत गंभीर रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई को एक बार जो कोल ब्लॉक्स की एलोकेशन है, कोयले की एलोकेशन है, उसकी मामले में, उसमें जो घपला हो रहा था उस मामले में सीबीआई को एफिडेविट देना था और सीबीआई ने एफिडेविट की जो वेटिंग है वो लॉ मिनिस्टर से करा ली और लॉ मिनिस्टर ने उसको वेट किया। ये जानकारी जब कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि उस समय के लॉ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना पड़ा लॉ मिनिस्टर को, क्योंकि उन्होंने सीबीआई के द्वारा जो एफिडेविट दिया गया था उसको वेट करा, उसको एक बार देखा और कहा ये सही है। तो कोर्ट ने कहा कि आप तो जांच के अंदर आप इंटरफियर कर रहे हैं, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर चीज है, क्योंकि आप सोचिए कि जिस भी केस में पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल केसेस होते हैं, उनमें अब सब केसेस के अंदर अगर सरकारें इंटरफियर करने लगी तो न्याय कैसे मिलेगा, कौन दिलाएगा न्याय? तो ये बहुत बड़ी चीज है जो कि जस्टिस लोकुर ने कहा इसका तुरंत इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके की चीजें हो रही हैं जिसे कहा जाता है रीविक्टिमाइजेशन, यानी कि जो प्रताड़ित इंसान है उसको फिर से प्रताड़ित किया जाए, ये भी हम देख रहे हैं। जो नाबालिग है, जो माइनर है, जिसने शिकायत की, उसकी 4-5 घंटे तक 9:30 बजे तक रात को उससे पूछताछ की जाती है। कहा जाता है कि हम जिसकी प्रताड़ित किया गया है जिसको, उस महिला को हम वापस क्राइम सीन पर लेकर जाएंगे, वो बताएंगे कि कैसे उनके साथ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं है, ये सीधा रीविक्टिमाइजेशन है। और फाइनली उन्होंने कहा कि दबाव बनाया जा रहा है। तो ये सही
उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी बात जो समझ में आ रही है कि जो जांच होनी चाहिए वो पूरी तरह से अनबायस्ड होनी चाहिए, बिल्कुल फेयर जांच होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। और एक बहुत ही अजीब सिचुएशन हमारे सामने है जहां पर ऐसा एक इंसान जिसके खिलाफ एग्रीवेटेड सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है, जो बहुत ही ताकतवर है और जो विटनेसेस पे दबाव बना रहा है, माइनर पे दबाव बना रहा है, उसके पिता पे दबाव बना रहा है कि वो अपनी स्टेटमेंट्स चेंज करें, उसे अरेस्ट नहीं किया जा रहा। जस्टिस लोकुर ने कहा कि हाँ वो फ्लाइट रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं वो भाग जाएंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें स्पष्ट नजर आ रही हैं। तो ये देखने की जरूरत है कि किस तरीके से ये जांच अभी तक चली है और दिल्ली पुलिस और जुडिशरी जो हमारी है उसकी क्या रोल रहा है, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जस्टिस लोकुर ने वो सारे प्रश्न चिन्ह हमारे सामने उजागर किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस लोकुर। आई एम नाउ गोइंग टू इनवाइट विदाउट फर्दर अडू Vrinda Grover. Vrinda Grover is one of the leading voices, one of the top advocates in our country for women's rights. She has played a very, very prominent role in ensuring justice for women, in making sure that she had a huge role to play in the 2013 criminal law amendments, which came after the gang rape, the Nirbhaya gang rape, which we all have heard about. And she has been working for decades on these sorts of issues. Vrinda, we are very grateful that you've made it today, despite many, several personal issues. But we would like very much for you to shed some light on the kind of things that we are seeing unfold in this case. We are seeing that there is, POCSO has been invoked. We are seeing the way in which the Delhi police has been behaving, asking for video evidence, audio evidence from those who are the survivors who have made these allegations, asking them to recreate taking them to scenes of crime. What does some of this, should some of this have required an immediate arrest? These are all questions that people are thinking about today, and I hope that in the next 15 to 20 minutes you will shed light on these and other issues. Thank you, Anjali. Thank you to Anhad and NAPM for bringing us all together on this issue today. Justice Lokur has actually given a very, very comprehensive presentation to us on the facts, law, analysis. How do we examine this both in terms of law as well as in terms of critically looking at the institutions? So I will simply add a little bit more detail to a very clear analysis that has already been presented to us. What emerges from Justice Lokur's presentation on this issue is that we are today witnessing a culture of impunity. It is no longer a phrase that we use in law or in legal academics, but we are actually witnessing a culture of impunity which is pervasive. And this culture of impunity is not accidental or incidental, it is by design. And the culture of impunity is designed to not allow any access to justice against those who the ruling present dispensation and regime seeks to protect and provide patronage. The entire fulcrum of rule of law, Article 14 of, which is one of the a part of the Golden Trinity on which the constitutional republic rests, is about equal treatment before the law and equality before the law. And if that is dislodged, as we are now seeing, and this case exemplifies it, and there are many others, both prior to this, which actually further reinforce this notion. That culture of impunity is therefore now getting embedded in our system. And why am I pointing to this? While today
it is very important, and I must say, it is very encouraging to see that the issue of sexual harassment has been foregrounded and is a matter of concern across the board. And we know from the women's movement and the feminist movement that it's not always that everybody comes together and rallies for women. And therefore, it's important that we also all understand the issue of sexual harassment as we understand the abuse of power. Why is it important to understand this impunity? Because as Justice Lokur pointed out to us, what happened before the Supreme Court? And the Supreme Court said, all right, FIR is registered. The senior most law officer for the government of India, the Solicitor General, has said investigation is now commencing. Our role is over. We are now closing the case. That was the prayer you had made. Now the matter can go. If you find any difficulty, you can go to the Delhi High Court, etc. What is our system? What is the foundation on which the system is based? It's based on a presumption that the state is going to act as an impartial arbiter, that particularly in criminal investigations, and that is why all criminal cases are called state versus, unless it's a private matter that you file for defamation, etc., are titled state versus so-and-so, because the crime is meant to have taken place on society. It is the role of the state to investigate and prosecute on behalf of not just the victim, but society, and ensure that the offender, the accused, is brought to justice. That is a presumption on which our criminal justice system rests. And the Supreme Court continues to believe that that is the role that the investigating agency, that the state is playing, where it is performing its role, exercising its power and authority as an impartial, independent arbiter on behalf of victims and society. The experience of our republic in the last few decades does not substantiate this. So it does not help to believe in assumptions, principles, which no longer hold true, which are not the lived experience of most Indians, and definitely not those who are marginalized either by religion or by caste or by gender or by ethnic minority. Therefore, the courts will have to, the formal legality with which the court is functioning is not going to provide justice to people. The court will have to recognize the true nature of the state, to concede and to make allowance that the state will do its role. Well, the state has been in breach of law. Again, Justice Lokur pointed out to us, there is no ICC committee, the Internal Complaints Committee, mandatory under the POSH Act of 2013, and since 1997, the Vishakha judgment of the Honorable Supreme Court itself. So who is not making the committee? The Wrestling Federation is a state-run institution under the Ministry of Sports. So has the Ministry of Sports never bothered to see that there is no Internal Complaints Committee? The state is in breach of its own law, and that seems to be all right with everyone, with all institutions concerned. I didn't hear NCW immediately jump into action, or any of these institutions whose mandate and job it is to ensure this. So as long as the courts, particularly the constitutional courts, are going to continue to give a free pass to the state by saying we are going to presume that you will act in accordance with law, in accordance with constitution, I think the court will need to pick up and see a very different lens, where the state is using power through its agencies to subvert and undermine the rule of law. And this can be substantiated by a lot of evidence for which we may not have time today. What were those wrestlers doing? They were protesting, exercising an Article 19 freedom, freedom of assembly, freedom of association. Prior to that also,
many citizens, but including in Delhi, have attempted to exercise their freedom of assembly. On each occasion, the state has said that you have no freedom left and we will turn you into criminals for simply exercising your freedom of assembly. So the danger that we are seeing here today is not just confined to the wrestlers. There is a signaling of state power in which the police is playing a front role, that no freedom of assembly will be exercised, not even in the designated places. And we do not see the courts. No constitutional court is coming in with alacrity to protect that freedom. And without these freedoms, the farce of electoral democracy can continue. In cases relating to sexual harassment, in cases relating to sexual violence, but particularly sexual harassment, there is a pattern. And those of us who engage with this and who have been taking up cases of sexual harassment, both inside and outside the court, and I can tell you that most women actually never make it to the court for a host of reasons. And we can see that those who do try to access courts, what happens to them? There is a pattern of sexual harassment. The Delhi police, actually as an investigating agency, and the state as a prosecuting agency should be acquainted with this pattern. It's their job. And if they don't know, many of us are there to provide them the knowledge, because it's a knowledge we have gained on the ground. Here you have a whole, many women wrestlers, minor and major in age, making complaints. There is a pattern in which the sexual harassment is committed. And this is again something that women's groups have documented. The way the hand will touch the body. What are the ways in which it will be committed? Each of these are patterns. That pattern in and of itself is actually very, very important evidence. If you see what was reported in the Indian Express and other places, they have given detailed narratives of how the sexual harassment was committed, how molestation was committed, just on the point of the sections of law. So it is section 354 capital A of the Indian Penal Code, which is sexual harassment, in which there may or may not be any touch. It can even be messages, asking for sexual favors, the way a person looks at. They have said how he would walk in front of their rooms, etc. Take a room right opposite the wrestler where the women were called, make it clear to them that if they wanted to play further, etc., they had to provide sexual favors. Then you have section 354, which continues to be titled in the archaic language of outraging the modesty of a woman, but what we can understand as molestation. Here, I just want to make it clear for all of us. Molestation means even if you make an attempt, like if you are going to touch the dupatta of a woman with an attempt to snatch it, that in itself constitutes section 354, which is assault or doing an act to commit an assault which will cause alarm and fear. When they're talking about groping, all of this is molestation under section 354 of the Indian Penal Code. Then you have stalking under section 354, capital D. Section 354, or use of criminal force and assault, is punishable up to 5 years. This is, and has a mandatory sentence of 1 year. This is the offense that carries the maximum sentence amongst the provisions that he is being charged with, on which investigation is ongoing. Then you have POCSO. Under POCSO, section 7, what is defined is sexual assault. Sexual assault under POCSO has a very different meaning. It is non-penetrative, and it means touching a minor on
the private parts like vagina, penis, because as we know, POCSO is gender neutral, or breasts. It specifically names vagina, penis, breast, or anus, touching with sexual intent, or touching any other body part with sexual intent. So that constitutes sexual assault. Why is aggravated sexual assault invoked here? Because if there is repeated sexual assault of a child, which the minor statement makes clear, where the person is on the management of an institution, which the accused, both the secretary and Rigbhushan Sharan Singh are, and if the accused is in a position of trust or authority with the minor, then it is a case of aggravated sexual assault. So under POCSO, section 10, which is a punishable offense, but the definition starts from section 7, and these specifics of a source of being in a position of status of authority, trust, on the management, repeated sexual assault, all come under section 9 of POCSO. Now, why is all this important for us? For two reasons. Whenever there is a complaint of sexual offense, either under the Indian Penal Code or under POCSO, the law says, and this is a law that has always been there under section 154, these are cognizable offenses. Whenever the police receives information about a cognizable offense, they must register an FIR. There is a judgment of the Supreme Court, a Constitution Bench judgment of Lalita Kumari, which says the police has no choice but to register an FIR. Interestingly, despite that, in the Supreme Court on the first day of hearing, there was an argument forwarded by the Solicitor General for India that the police thinks that it needs a preliminary inquiry in this matter. I think the police is bound by the law, and the police should only think in accordance with the law, otherwise they are in breach of law. When they realized that the Supreme Court was not in a mood to cater to this, they said, okay, just give us some time, we'll do it. We also know that the Verma Committee and the campaign post-Nirbhaya, one of the primary reasons why changes were sought in the law was to undercut the impunity enjoyed by the police, and section 166A of the IPC was introduced as a new offense in 2013, that if a police officer does not investigate a sexual offense or does not register an FIR in a sexual offense, then there will be a case put against the police officer. This is a new offense created in the IPC. Recently, since now 2023, marks 10 years of the 2013 Criminal Law Amendment Act, I actually filed an RTI, and I asked questions pertaining to section 166A. How many FIRs, how many charge sheets, what prosecutions? Not surprisingly, I was told, oh, we have no data relating to 166A. All my questions drew a blank from the concerned authorities. So the provision that is meant to undercut impunity is kept in abeyance, and therefore there is no surprise that we do have such rampant impunity. Under POCSO, we have been hearing, and I think it's very important to understand that this level of confusion, and we know the media is working as mouthpiece and amplifying what the state wants it to, the government wants it to. There is deliberate confusion being created. That there are multiple statements. The minor was actually a major. There is now a second 164 withdrawing. Well, if there are, I don't know. None of us are privy to the investigation except what is being reported in the media. And the father can't go and say, I'm taking it back. And she said, what she said was not true. I don't think that's how the Indian legal system works, at least not the legal system that I know of. All this needs to go before a court of law. And whether there is a discrepancy, which statement is a statement made under coercion, under duress, and which is a statement that will
stand scrutiny of law and will be against which there will be cross-examination are all matters of trial. They're not to be decided now. It is never decided at this juncture of investigation. What does become clear, and which was referred to by Justice Lokur also, so while granting bail, and we know that the maximum number of people in our jails are under trials, against many of whom there is usually not a shred of evidence. There is a tripod test, which was referred to by Justice Lokur. We can keep flight risk aside, but tampering with evidence and intimidation of witnesses. There is material today to show that there is tampering of evidence and intimidation of witnesses ongoing as we speak. And yet no arrest is made. And therefore, there is clearly a very different law that operates for certain persons in this country. And therefore, there is no Article 14 that operates anymore, definitely not in issues of sexual harassment by men in positions of power and authority. And who can be more powerful than a member of parliament who has social, economic, political clout and enjoys the good offices of the state. We also have to understand when it comes to arrest that, yes, the law today is that if the offenses are punishable with under 7 years, and all the offenses with which he is accused are punishable with under 7 years, the police has to first issue a Section 41A Code of Criminal Procedure notice to the accused to examine the accused. Only after that, if required, if they think the accused is being evasive, not cooperative, or custodial interrogation is required, will the arrest be made. So I think we also need clarity that in what circumstances is arrest made. In this case, given the nature of intimidation, there's no doubt. It's all in the public domain. There is no iota of doubt that A, he needs to be arrested because he is intimidating witnesses, both by his public, the public meetings that he's holding. A man who is under investigation, who can be tried, convicted, and sentenced, is today saying that next year, before May, I will contest elections from this seat. I do not know how else power can be used. And this is not even abuse of power. It's brazen, blatant use of power. His custodial interrogation is required because questions need to be put to him. So even if the arrest initially was not required and a 41A notice is issued, that is in accordance with law. The other thing I want to just briefly focus on is this whole business of what is evidence. And I think that's very, very important because this case, and my fear is that it's you are actually signaling to the women of this country, to the girls of this country, do not challenge sexual abuse, especially when it is a man in position of power. And I have always had many women come to me for legal advice. And the first question they invariably ask in a case of sexual harassment, the woman will say, I don't have evidence to prove it. And I've always said to them, you are the evidence. It is your statement. It is your testimony. You are saying so. Let us go back at the details of the FIRs, details of the narratives of the testimony statements given by the women wrestlers. They have given specifics, dates, nature, where it happened, how it happened, what he did, when he did, what he said, how he touched. This is evidence. What else is evidence? How are people convicted or acquitted in this country? A person stands in the witness box and says, I saw X shoot Y. And that is a witness. What else is evidence? The person will be cross-examined, as will be these wrestlers. Why is it that in this case, corroboration by audio, video, material, etc., is not determinative? It is not even determinative in a case of rape, where the sentence is much higher
and therefore evidentiary scrutiny will be much greater. A woman's sole testimony, if found credible and inspires confidence, is sufficient for a conviction in a case of rape. And here there are so many women showing his pattern. You can have a person, and everyone who has experienced this and engaged with this knows, a person can be sexually harassing you, sitting next to you, and the person across the table may not know it. That is the insidious nature of this offense. That somebody will rub against your thigh, somebody will lean in a certain manner, touch you in the back in a certain manner, grope you while a photograph is being taken. Will the person sitting in the front row of the photograph know? What does Delhi police think? If it will record the statements of all the other people in the photograph, who will say, oh, I didn't see this. Yes, you didn't see it. You will never see it, because this is how this offense is committed. This is how women are groped. Every woman living on earth knows this. So I don't know what Delhi police is trying to do, and I share the apprehension that Justice Lokur has voiced, that there is some other scheme at play over here, by which there is an attempt actually to create a counter narrative in the charge sheet. And through that counter narrative, prior to any charge sheet, if there is a charge sheet, I'm beginning to have real apprehension on that count. They will subvert everything that these women wrestlers say. There will be three other people from his residence saying, हाँ वो आई थी, जब वो गई थी तो वो तो मुस्कुरा रही थी. I did not see her looking as though she is shaken. You know, women go in and out of sexual harassment looking as though nothing has happened. That is what sexual harassment is all about. And we need to understand that this offense is very, very different. And sexual molestation is very different. Women actually go through domestic violence and at the same time go out with the husband smiling to a wedding. And we all know that. And that's why you need to investigate this very differently. I'll just quickly come to witness protection. There is a judgment of January 2022 of the Supreme Court, which actually says that now you have to have vulnerable deposition centers across the country in every district for deposition of vulnerable witnesses. It's already there for POCSO cases. All POCSO witnesses will have it, but even otherwise for all vulnerable witnesses. In Smriti Tukaram Badade versus State of Maharashtra of January 2022. This is the apparatus of the law that we have, but that apparatus of the law is not functioning. And I'll just end with saying that this investigation is nullified. But does the road end here? As Justice Lokur pointed out, there have been umpteen cases where constitutional courts, that is the High Court or the Supreme Court, when it is pointed out that the investigation is nullified, they have stepped in, and they can even today go to court and say, we have no faith in the manner the investigation is being done, and a special investigating team appointed and monitored by the court can investigate this. Because clearly the Delhi police is both unable and unwilling to conduct this investigation. Just to end with saying that a lot of talk is done about dignity of women. Every political party, particularly the government, talks about it endlessly at every public function. This investigation, this case is sending a chilling effect across the country to women and girls. Therefore, we need to pay attention to this as we are doing today. And we also need to understand that rule of law is under severe threat in this country and cannot be chanted and cited, oh, we are a country run by rule of law. Today, rule by law is taking place on citizens of this country. The state and everyone it protects is today above the rule of law. And we have to join the dots from what is happening in the remission of the mass murderers and gang rapists of Bilkis Bano
to what is happening in the wrestler's case. If we fail to do that, we are all going to lose any rights as citizens. Thank you. Thank you very much, Vrinda. That was very comprehensive and very powerfully put. I will attempt a brief translation of what Vrinda had said. मैं बहुत संक्षिप्त में जो वृंदा जी ने बातें रखी हैं उसके मुख्य बिंदु सबके सामने हिंदी में रख देती हूँ। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हमारे देश में और अभी जो इस मामले में हम देख रहे हैं इस केस में, वो बहुत क्लियरली कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी दिखा रहा है। कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें, दंड मुक्ति की संस्कृति, मतलब वो जो एक संस्कृति है हमारी, वो उन लोगों को पकड़ने की और जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके पीछे जाने की नहीं है, और एक तरीके से बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के गलत तरीके से जांच पड़ताल करके इस मामले को बंद करने की कोशिश हो रही है। और हम ये देख रहे हैं ये केवल इस केस में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वृंदा ने यही कह के बात शुरू करी कि जो हम बात करते हैं समानता की, जो हम बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ की, वो हमें आज हमारे देश में हिलता डगमगाता नजर आ रहा है। वृंदा ने कहा कि ये उन्हें देखकर एक तरह से अच्छा भी लग रहा है कि इस तरीके के मामले, जो यौन उत्पीड़न के मामले हैं, जिन्हें पहले केयरफुली नहीं और सीरियसली नहीं हैंडल किया जाता था, सोचा नहीं जाता था इनके बारे में, आज वो हमारे देश में बहुत गंभीरता से लिए भी जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि उन्होंने कहा हाईलाइट करने की जरूरत है। पहली चीज तो वृंदा ने कहा कि जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला था उसे डील किया, वो चिंताजनक है उनके अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि एफआईआर रजिस्टर हो गई है, ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने केस को डिसमिस किया। कहा कि आप कोई तकलीफ होगी तो आप हाई कोर्ट जाइएगा, लोअर कोर्ट में जाइएगा। लेकिन कोर्ट ने ये बंद कर दिया मामला, ये कहकर के एफआईआर अब दर्ज हो गई है। पर इसके पीछे कोर्ट की क्या सोच है? इसके पीछे कोर्ट की क्लियर सोच ये है कि जो हमारी जो स्टेट है, जो हमारे देश में व्यवस्था है, जो सरकार है, पुलिस है, वो अपना काम सही से संविधान के मुताबिक कर रही है। और उन्होंने कहा कि यही एक बड़ी बात है जो समझने की शायद आज कोर्ट को भी जरूरत है कि ऐसे मामले जहां पर इतने ऑब्वियस केस में पुलिस को एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही है और लोगों को आना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट तक कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि जो सरकार को काम करना चाहिए, जो व्यवस्था, जो संस्थाएं हैं उनको काम करना चाहिए, वो कर नहीं रही हैं। और इसलिए ये अजम्पशन पे चलना, सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशरी का इस अजम्पशन पे चलना कि सही तरीके से काम होगा, ये ही अपने में एक गलत अजम्पशन है। और वृंदा ने ये कहा कि स्पेशली जहां पर वल्नरेबल, मार्जिनलाइज्ड, जो हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं जिनके खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है, माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ आज हमारे देश में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, संस्थाएं क्या कर रही हैं, उसको देख आंखें खोलकर शायद जुडिशरी को देखने की जरूरत है। और कोर्ट को ये समझना होगा कि ऐसे मामलों में जहां पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो लोग पावरफुल हैं, जो ताकतवर हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा, उनके साथ सरकार खड़ी हुई नजर आ रही है, संस्थाएं खड़ी हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में कोर्ट अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। वृंदा ने कहा कि इतनी
स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगह पर जो कानूनों में लिखा गया है जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब जो आईसीसी है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जो शिकायत की कमेटी है, जो कि विशाखा की जजमेंट जो 1997 में आई थी, तब से होना ही चाहिए था रेसलिंग फेडरेशन के अंदर भी एक कंप्लेंट्स कमेटी को, शिकायत कमेटी को, जहां पर जाकर किसी का भी उत्पीड़न हो वो अपनी शिकायत दर्ज कर सके। अब वो आज तक हम देख रहे हैं कि सरकारों ने वो कमेटी ही नहीं सेटअप करवाई है। जो फेडरेशन है वो तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है, और जब सरकार और रेसलिंग फेडरेशन अपना काम ही नहीं कर रहे, इतना बेसिक काम नहीं कर रहे कि वो आईसीसी को सेटअप करें, और जब आईसीसी सेटअप नहीं हो रहा है तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन जो कि महिलाओं का आयोग है, उनको तुरंत उठना चाहिए, जागना चाहिए और कहना चाहिए कि इस तरीके की कमेटी होनी चाहिए थी। अगर किसी महिला के खिलाफ कुछ भी उत्पीड़न होगा वो कहाँ जाएंगी, वो अपना काम नहीं करते दिखाई दे रहे। तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट अपना नजरिया सही रखे। उन्होंने कहा कि लेंस जो है जिसके थ्रू कोर्ट देखता है, जुडिशरी देखता है चीजों को, वो जुडिशरी को बदलना होगा। वृंदा ने बताया कि हमने जिस तरीके से देखा है कि धारा 19 जो है, आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत हम लोगों को एक लोकतंत्र में सभी को ये हक है, ये अधिकार है कि हम इकट्ठे हो सकें, हम अपनी आवाज उठा सकें, कहीं कहीं पे हमें कुछ गलत होता दिखता है हम प्रोटेस्ट कर सकें, उस पर भी पूरी तरह से आज हम देख रहे हैं अटैक है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से सारे प्रोटेस्ट्स को क्रिमिनलाइज करने की एक कोशिश हमारे देश में चल रही है। इस पे जो मामला है सेक्सुअल हरासमेंट का, उस पर वृंदा ने कहा कि ये समझने की जरूरत है, और स्पेशली वृंदा और दूसरे जो लॉयर्स हैं जो कि वकील इन केसेस पे काम करते हैं, जुडिशरी में भी ये बात बहुत होती है, वो सब समझते हैं कि किस तरीके से यौन उत्पीड़न होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होती है। और दिल्ली पुलिस और अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज को नहीं समझ में आ रहा तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। उन्होंने कहा कि सीधी बात है कि ये सारी जो तरीके की चीजें हैं यौन उत्पीड़न, ये खुले में तो नहीं होता, और इसमें बहुत स्टेजेस हैं, बहुत पैटर्न है जो बहुत क्लियरली फॉलो किया जाता है ऐसे केसेस में, ऐसे लोगों द्वारा जो यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। पहली चीज कि किस तरीके से ना केवल जरूरी है कि टच हो, छुआ जाए, अगर मैसेजेस भी पास हो रहे हैं कि आपको अगर खेलना है, अगर आपको काम करना है तो आपको सेक्सुअल फेवर्स देने पड़ेंगे, ऐसे भी केसेस के अंदर धाराएं लागू होती हैं, और वो भी यौन उत्पीड़न का एक क्लियर हिस्सा है। मोलेस्टेशन, जहां पर छेड़छाड़ शारीरिक रूप से की जा रही है, उसमें चाहे किसी दुपट्टे का, कपड़े का खींचना है या फिर गलत तरीके से किसी को टच करने की बात है, ये सारी चीजें हैं, पीछा करना, स्टॉकिंग करना, ये सारे कानूनी अपराध हैं और इसमें कोई शक नहीं है। पॉक्सो जो कि बच्चों के खिलाफ, नाबालिगों के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न होता है, उसका जो प्रावधान है वो भी बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है कि अगर ये नॉन पेनिट्रेटिव टचिंग इसमें इंक्लूडेड है, कि जरूरी नहीं है कि पेनिट्रेशन हो, लेकिन अगर गलत तरीके से कोई भी बच्चे को छुआ जाए, अगर उन्हें गलत जगह पे, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे छुआ जाए, वो भी एक ऑफेंस है पॉक्सो के तहत बहुत क्लियरली। और उन्होंने कहा कि ये सारे जो केसेस हैं ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस हैं, मतलब ये तो हम ये भी नहीं कहते कि ये एक इंसान, एक बच्चे के, एक महिला के खिलाफ हो रहे हैं, ये तो समाज के खिलाफ हो रहे हैं। ये जो ऑफेंसेस हैं, ये जो सारी क्राइम हो रहा है, ये तो समाज के खिलाफ क्राइम है, और शायद यही एक कारण
कारण है कि हम सभी लोग इतने इससे उत्तेजित भी आज अपने आप को महसूस करते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे केसेस में, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर ललिता कुमारी और दूसरे केसेस में कहा भी है कि एफआईआर होना ही है ऐसे केसेस में, कोई चॉइस नहीं है पुलिस के पास। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़ रही है। वहां पर सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि अभी तो हम एफआईआर इसलिए नहीं कर रही है पुलिस क्योंकि वो जांच पड़ताल, प्रिलिमिनरी जांच पड़ताल करना चाहती है, प्रायर जांच पड़ताल करना चाहती है। ये सब गलत बातें हैं, ये सब कानून के खिलाफ बातें हो रही हैं, कानून को तोड़ रही हैं ये बातें। और वर्मा कमेटी की भी चर्चा की वृंदा ने, और उन्होंने कहा कि ये जो पूरा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की भी जो बात थी वो इसलिए थी कि ये जो इम्प्यूनिटी है, ये बिना डर के कानून को तोड़ने का जो पूरा मामला है, शिकायतें ना दर्ज करके जो ऐसे लोग हैं जो यौन उत्पीड़न करते हैं उन्हें बचाने का जो पूरा सिलसिला है, इसको बंद करने के लिए हुआ था। और इसमें आईपीसी की धारा एक जोड़ी गई थी कि अगर कोई पुलिस अधिकारी, यदि पुलिस अपना काम नहीं करती, अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती, शिकायत नहीं लिखती, एक्शन नहीं लेती, तो पुलिस अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा, और यही शायद कारण है कि आज भी इतने लंबे संघर्षों के बाद, निर्भया के जो पूरा कांड हुआ उसके बाद इतना संघर्ष हुआ, ये सारे संघर्षों के बावजूद आज हम देख रहे हैं कि हमारे रेसलर्स को आकर कैसे सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और किस तरीके से उनके वो भी आज वही समस्याओं को झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी कंफ्यूजन सामने आ रही है कि अरेस्ट इनको किया नहीं जा रहा बृजभूषण शरण सिंह को। उन्होंने कहा ये समझने की जरूरत है कि ज्यादातर यदि 7 साल से कम जेल का प्रावधान हो किसी कानूनी अपराध के खिलाफ तो जरूरी नहीं है कि अरेस्ट किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले में जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का रवैया है, ऐसे केस में तो बहुत ही स्पष्ट है कि उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए दिल्ली पुलिस के द्वारा और उन्हें कस्टोडियल इंटेरोगेशन करनी चाहिए, उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट है कि वो दबाव बना रहे हैं, वो जो एविडेंस है उसको टेम्पर कर रहे हैं, वो दबाव बना रहे हैं तमाम ऐसे लोगों पर जिन्होंने शिकायत दर्ज करी है, जो नाबालिग लड़की है, जो बच्ची है और उसके पिता हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, सामने सबको स्पष्ट नजर आ रहा है। और ऐसे मामले में अरेस्ट बहुत ही जरूरी है और कस्टोडियल इंटेरोगेशन बहुत ही जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि जस्टिस लोकुर के साथ वो बिल्कुल अग्री करती हैं कि ये ना करके दिल्ली पुलिस दिखा रही है कि किस तरह से आज वो बचाव करने की कोशिश कर रही है एक ऐसे इंसान का जिसने इतने ग्रेव ऑफेंसेस करे हैं। अब उन्होंने अंत में कहा कि लाखों करोड़ों महिलाएं जो हमारे देश में हैं, और उन्होंने कहा कि इतनी महिलाएं आती हैं जो कहती हैं कि मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है कि मेरे साथ इस तरीके का दुष्कर्म हुआ है, यौन उत्पीड़ा हुई है, तो मैं क्या शिकायत करूं। तो उन्होंने कहा उनके लिए बहुत ही खराब सिग्नल हमारे देश में आज जा रहा है और हमारी जो संस्थाएं हैं देश की और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें ये समझना होगा, क्योंकि अगर ये इस केस के अंदर इस तरीके का सिग्नल जाता है तो ये जो तमाम लाखों करोड़ों महिलाएं हमारे देश में हैं जिन्हें यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, वो किस बलबूते पर आएंगी, किस विश्वास के साथ आएंगी और शिकायत करेंगी, और इस तरीके की जो दुष्कर्म है वो तो बढ़ते ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या एविडेंस चाहिए है, अगर एक महिला के साथ इस तरीके का दुष्कर्म हो रहा है तो उसे क्या प्रूफ ला के देना है। उन्होंने कहा कि कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, उनका जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ है और वो स्टेटमेंट के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। जब एक महिला इतना डिटेल दे रही हैं, वो बता रही हैं कहाँ किस तरीके से
कहाँ पर, किस समय पर, किस जगह पर उनके साथ ये उत्पीड़न हुआ, यौन शोषण हुआ, जब वो इतना डिटेल दे रही है, अपनी टेस्टिमनी लिख रही है, वो सफिशिएंट होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये इस तरीके का जो अपराध है, इसका कोई एविडेंस, कोई वीडियो, कोई ऑडियो तो कोई बना के रखता नहीं है। कौन देगा? ये छुपकर ही होते हैं ऐसे ऐसे काम, रात में, देर रात में कहीं पर किसी को परेशान करके होते हैं। कोई सामने अगर कोई फोटोग्राफ ली जा रही है, जैसे कहा भी गया है, एक रेफरी ने कहा है कि फोटोग्राफ लेते टाइम ग्रोपिंग हुई थी, तो जो आगे बैठे हैं वो क्या देखेंगे? तो आप अब ये कहेंगे कि आगे बैठे लोगों ने कहा हमने तो देखा नहीं, तो इसलिए वो ठीक, वो उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये हो रही हैं, ये बहुत ही गलत है और ये बहुत ही चिंताजनक है। और उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि जो लोग सामने आते हैं, विटनेस बनते हैं, उनकी प्रोटेक्शन हो। और 2022 में ये पूरा इस मामले के ऊपर एक कोर्ट का भी जजमेंट आई है, बहुत जरूरी। और स्पेशली जो पॉक्सो के तहत बच्चों का, जो नाबालिगों का जो टेस्टिमनी है, जो विटनेस बनते हैं, उनके लिए प्रोटेक्टेड तरीके से वो अपनी बात कर सकें, वो जरूरी है कि उनके लिए सिस्टम बनाया जाए। उन्होंने ये कहकर अपनी बात समाप्त की कि ये दुर्भावनापूर्ण, मैलिफाइड इन्वेस्टिगेशन साफ है, नजर आ रहा है, और हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसे ये समझना होगा और उसे स्टेप इन करना होगा, वरना पूरी सिस्टम, पूरी सरकार और व्यवस्था ऐसा लग रहा है कि जुटी हुई है बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में। बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा आपका। और शाहरुख से अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो अपनी बात रखें। हमने कहा था कि हम 6:30 बजे तक खत्म करने की कोशिश करेंगे, पर हमारे साथ इतने जानकार पैनलिस्ट है कि हम उनकी बात बीच में रोकना भी नहीं चाह रहे हैं। और शाहरुख एक ऐसी लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, जो बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, जहां पर भी अन्याय है आज खड़ी हैं। आज भी शाहरुख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। उत्तराखंड में जिस तरीके का हम देख रहे हैं, जो सारा माहौल बना हुआ है, किस तरह से पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है एक कम्युनिटी के लोगों को, उस पर आज शाहरुख कोर्ट में सक्रिय थी और उस पर भी केस डाल रही थी, पर आपने ज्वाइन किया शाहरुख, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाहरुख आलम इज अ very very senior, well known advocate, lawyer who stands for people, for justice in different kinds of cases. And we are very grateful today that she has agreed to join us. Shahrukh, the floor is yours. Thank you very much, Anjali. When Anjali asked me to speak today, I didn't think I knew enough about the subject at all, but I really did want to speak today in solidarity and in admiration for those wrestlers who are protesting, for the women wrestlers. And my plan was that I'll listen to one of Vrinda's interviews and basically reproduce whatever Vrinda has said. मगर अंजलि ने ये नहीं बताया था कि वृंदा आज खुद मौजूद होंगी बनफ्से नफीस. So now in the event, I do a little bit of work around hate speech and dissent. So I thought I'd speak from my experiences and sort of add to the intersectionality of the debate today. But my gamut of experience is already covered by all that Justice Lokur has said and Vrinda has said. So I'm basically just repeating, but repeating from my experiences. There's a very senior journalist by the name of Sunil Menon, and he had said something that really spoke to me, that speaks to the times. Sunil said that what we see around us now is sort of an autoimmune disorder of democracy, where everything that we've known, every idea that we've grown up with, seems to have lost its meaning. He said that meanings are sliding forward these days into a mutation.
So all these ideas, in the good old days, we talked about interfaith relationships and interfaith love. That's now become love jihad. We knew what dissent meant earlier. Now there's a new meaning to dissent, and that meaning is unlawful activity or even terrorist activity. We knew how to distinguish hate speech from resistance, from protest speech. But again, because of the inversion of meanings, those distinctions are lost. And I find that the ground beneath my feet is shifting. I sometimes don't understand what is going on in the court of law or going on outside in the public spaces. And I feel sometimes that there's so little space for nuance, so little space for reflection and thinking, that sometimes I find that I'm taking positions which I'd not normally take. For instance, I would never have liked to appear as a respondent in one of these petitions filed by one Mr. Ashwini Upadhyay, where he's asking for a ban on Muslim divorce laws, Muslim personal laws of divorce. Normally, I wouldn't do that. Normally, we'd want to discuss the nuances. But these times are such that we find ourselves in strange positions. And I was thinking today that the demand for arrest is also one such demand. Normally, I appear for I'm a defense lawyer. I appear for people who have been accused of crimes. And normally I make the argument that you should not be arresting people without charge. But now in this case, I have been demanding arrest. And I've been thinking about this. I've been thinking about why I'm taking these two very different stands. But now I also think that this is a problem of mutation of meanings. I think this is a problem of false equivalence. I'm drawing a false equivalence between very different cases. There are cases where the accused is put under the highest scrutiny by the criminal investigation system. Highest scrutiny bordering a lot of times on oppression, on custodial pressure, on harassment of the family. And in those cases, the criminal justice system is doing everything it can to gather evidence, sometimes even false evidence. But in these circumstances, the position of power is inverted again. The position of power is completely different. And in this case, the accused holds a position of power over the survivors, over witnesses, their families. And I would argue that he holds a position of power even over the criminal investigation system. It seems that even they are bowing down to him. So had there been another set of circumstances, for instance, if the safeguards were in place, had there been an ICC headed by a woman and populated with women, although even that is no assurance of anything, but had there been unbiased investigation, had this person been stripped of positions of influence, or had this person been stopped from politically mobilizing opinion against rule of law, if the minor concerned in this case was actually treated with the kind of sensitivity that is due to a child, or if the survivors had not been told to recreate the scene of the offense, had they been treated with some dignity and with some sensitivity, and had all the structural safeguards not collapsed, probably there would have been no need for arrest. But it's because there is a systemic failure of the rule of law, there is a need for arrest. And I think that is what distinguishes this case and the circumstances of this case from the other cases that I usually deal with, where the position of power vis-a-vis the accused and the criminal investigation system is completely different. And one last thing, and again, Justice Lokur and Vrinda have touched upon this. The lack of arrest, the fact that the police are not interested in arresting this particular accused, is also reflective of what kind of investigation is going on and what is going to be reflected in the case diary.
Because after all, at some point, the police will also have to justify why they did not arrest this person. And at that time, they will have to produce their case diary. And I'm speculating, but I'm fairly certain that at the time when the case diary is produced, we will see that no case is made out for his arrest. So therefore, this is also reflective of where the case is going. But coming back to the question of systemic collapse of rule of law, this is again a dilemma. And I want to sort of pose this question to Justice Lokur and to Vrinda. How are we to act in the face of systemic failure? And how are the constitutional courts to act in the face of systemic failure? Again, the hate speech case that is going on in the Supreme Court is a case in point. Order upon order, asking for FIRs to be registered, asking for preventive measures, all kinds of directions. But the Dharam Sansads are going on, the hate speeches are going on, structural violence is going on. There is a brazen disregard. What are constitutional courts to do? And I think that because of this systemic collapse and our own fight as lawyers has become very episodic. So we go to court, we ask for the registration of an FIR. That's a minor victory. And we come back and nothing happens. And then we go back again and we say, but please investigate, please do something, please arrest, please file a charge sheet. So it's all episodic. And everyone gets tired. And some of us just fall by the wayside because nothing is moving, nothing seems to be moving. So I really don't know. I don't know if we need to change the terms of the debate. I don't know if we need to think about whether we're just reacting, FIR, arrest, charge sheet, or do we need to speak in terms of do we need to adopt another language? Do we need to talk about rule of law being a fundamental right? And do we need to ask the courts not to just direct for the registration of FIRs, but to ensure that my fundamental right to rule of law is guaranteed in every case? It's true that the Supreme Court or any court can't arrest in all fairness. It can't order arrests in all fairness. But it can recognize manifest arbitrariness when it sees it. It can call out manifest arbitrariness when some arrests happen at the drop of a hat for no apparent reason, and in other cases where it's mandatory, no arrests happen. The Supreme Court can also call out manifest arbitrariness when procedural, where there are procedural irregularities, or whether explicitly the investigating authorities are not following the statutory mandates, like in this case. I do think that because of this arbitrariness, the Supreme Court should have monitored. It should have monitored investigations. But like Vrinda said, it's still pretending as if there is no systematic failure of rule of law. The court is still pretending that things are all right. Where do we go from here? I think that there is an informal categorization that the Supreme Court often does, and it sees whether it can actually respond to certain cases, certain controversial cases or not. And some cases, it pushes into the realm of the political. It decides that it cannot help with some cases. It decides that these are cases meant for the political realm to be dealt with politically in the political sphere. And it backs off a little bit. We've seen that repeatedly. We've seen that in the Babri Masjid case. We're seeing that again in the Gyanvapi case and multiple times. But there again, and I do think that this is not one such case. I think this is a case that fits squarely within the legal realm. But even if it were to be sort of relegated to the realm of the political, then at least the Supreme Court should back people when they're out in the political realm protesting, when they're dissenting against the
the government in power and its policies and its laws. But we don't see that happening either. We don't see the Supreme Court protecting dissenters in the way that it should. In fact, it's allowed protests to be stopped without any application of rule of law. And I have one such example. I have several examples. I've seen now that when the police stops protests or marches, etc., or dharnas, or now increasingly conferences and discussions, it comes not with any authority of law. They don't invoke any section of the law. It comes with a mohar of the station house officer. Like in the olden times, things used to operate with the mohar of the sovereign. Now things seem to operate with the mohar of the SHO, which I suppose is in keeping with the Sengol. We are living in the times of the Sengol. Two last points. While talking about dissent and while talking about the general cramp down on dissent, we have to also recognize that even dissent is now a graded right. Not everyone has the same right to dissent. If you're holding a Dharam Sansad, of course, then there is a comprehensive right to protest, to say whatever you will. But in other cases, and depending on who you are, sometimes there's deployment of law in the form of the UAPA even to clamp down on dissent. And at other times, it's not UAPA. It's not a legal clampdown, but it's something else. It's police violence, or sometimes political violence, or communal violence, sometimes social violence. There's social pressure. But I think it's also important to recognize that the state responds in different ways, deploys different kinds of violence to different kinds of dissent and to different people who are dissenting. And the very last point today, Anjali mentioned what has been happening in Uttarakhand. And I've been sort of working a bit around cultural reproduction of Muslims as predators of Hindu women, as predators of jobs, livelihoods, and land. But the cultural production specifically, I've been looking at films about Johar and Muhammad Ghori and the Kerala Files now, and the whole idea of love jihad, which is all anchored in sexual violence done by Muslims. And what is love jihad? At worst, if at all, in legal terms, it's a case under POCSO. But in its political framing, it's made out to be an attack of the outsider / predator / Muslim on Hindu women. And we haven't been able to dislodge that. When I was thinking about the whole idea of love jihad, about what is happening in Uttarakhand, and also thinking about what is happening at Jantar Mantar, what is happening with the wrestlers, the idea of the predator as Muslim, instead of the predator being quite central to power, is something that we could also probably think about. Thank you. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख। आपने बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ों को हमारे सामने रखा है। मैं बहुत जल्दी से छोटी सी एक संक्षिप्त में ट्रांसलेशन कर देती हूँ हिंदी में। आपने बात शुरू करी है कहकर कि हमारे देश में और हमारी जो लोकतंत्र है उसमें एक डिसऑर्डर सा समझ में आ रहा है, जिसको हम जहां पर शब्दों का मतलब ही कुछ बदल सा गया लगता है। और आपने कहा जहां पर दो एग्जाम्पल आपने दिया कि जहां पर दो मजहबों के लोग यदि प्यार करते हैं, शादी करते हैं, उसे आज हम लव जिहाद के नाम से अब जानने लगे हैं। अगर हम कहते हैं कि हम डिसेंट कर रहे हैं, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं किसी अन्याय के खिलाफ, उसे आज अनलॉफुल एक्टिविटी, दंगा, टेररिज्म इस नाम से पुकारा जाने लगा है। तो मतलब परिभाषाएं ही बदलती सी नजर आ रही हैं। और आपने ये कहा कि ये जो पूरा मामला भी है, इसे हमें कहीं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। और जब इस तरीके की चीज किसी लोकतंत्र में होती है तो
जो बातचीत, जो नुएंस, जो बारीकी में बात करने की और हमारी जो अलग अलग सोच है जिससे कि आगे हम इवॉल्व करती है हमारी सोच फाइनली, वो खत्म हो जाती है। और आपने कहा कि हम कहीं पर देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो कि अरेस्ट को लास्ट ऑप्शन मानते हैं, कहते हैं कि अरेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि चार्जेस नहीं फ्रेम हो जाते, प्रूव हो जाते, वो आज कह रहे हैं कि अरेस्ट करने की जरूरत है। और शायद ये जरूरत इसलिए आज हमें इतनी लग रही है क्योंकि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो अक्यूज्ड हैं, जिनके खिलाफ एलिगेशन लगाए हैं, वो कैसे आज काम कर रहे हैं, पूरी तरह से कहीं पर स्टेट की जो व्यवस्था है उसकी प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं। तो वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोगों से अपनी स्टेटमेंट्स चेंज करा रहे हैं, और जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, वो पूरी तरह से नजर आ रहा है कि कैसे गलत तरीके से वो चल रहा है। और आपने ये कहा कि जो ये हो रहा है, ये इसलिए भी बहुत चिंताजनक है क्योंकि पुलिस अरेस्ट कर नहीं रही, लेकिन पुलिस डायरी जो मेंटेन होती है उसके अंदर पुलिस को बोला जाएगा कि आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया। जब कोर्ट में बोला जाएगा, पुलिस वो डायरी प्रोड्यूस करेगी, तो उसमें पुलिस जरूर ये दिखाएगी कि कारण ही नहीं था बृजभूषण सिंह शरण को अरेस्ट करने का, कोई जरूरत ही नहीं थी। और एक तरीके से आज ही हम समझ पा रहे हैं कि पुलिस की जांच का क्या अंजाम होने वाला है, पुलिस क्या कहने वाली है, क्योंकि अगर ये जांच सही से चलनी होती, चल रही होती, तो अरेस्ट हो चुका होता बृजभूषण सिंह शरण का। जिस तरीके का रवैया वो अपना रहे हैं, जिस तरीके की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिस तरीके का वो दबाव बना रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि ऐसे में जब हमारे लोकतंत्र में परिभाषाएं बदल रही हैं, पूरी तरह से जो हमारा जो सिस्टम है, व्यवस्था है, वो ही टूटती जा रही है, ऐसे में जो हमारी न्यायपालिका है वो क्या करे? जब सिस्टमिक फेलियर होता है तो न्यायपालिका क्या करे? ये भी एक सवाल उन्होंने कहा कि उनके जहन में उठता है और जो कि वो सोचना चाहती हैं उस पर और पूछना भी चाहती हैं आज। उन्होंने कहा कि हेट स्पीचेस का आप मामला ले लीजिए, हम लोग कैसे देख रहे हैं कि बात हो रही है, किस तरह से बिना किसी हिचक के हेट स्पीचेस दी जाती हैं, कम्युनिटीज को टारगेट करते हुए उस पर कोई एक्शन नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ये सोचने की जरूरत है कि हम डिबेट के टर्म्स को ही कैसे चेंज करें, जो संवाद है उसे ही हमें बदलने की जरूरत है, उसे कैसे करें, एक नई भाषा का कैसे हम कैसे लाएं, जहां पर हम ये कह सकें कि जो रूल ऑफ लॉ है वो हमारा मौलिक अधिकार है, और हम न्यायपालिका को ये कहें कि आप बाकी छोड़िए, आप हमारे इस मौलिक अधिकार को हमें दिलाइए। हम चाहते हैं कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ रहे, हम एक सभ्य समाज रहें। हम यहाँ बातें कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ क्या दुष्कर्म हो रहे हैं, यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो मतलब क्या ये एक सभ्य समाज में होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ जहां पर हो, जहां पर न्यायिक व्यवस्था एक सही से चले, हमारा ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारे रिपब्लिक में, हमारे देश में। और सुप्रीम कोर्ट को शायद जरूरत है ये समझने की कि आज मांग ये है लोगों की कि आप हमारा ये मौलिक अधिकार हमें दिलाइए। और इसीलिए शायद जरूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को बहुत ध्यान से मॉनिटर करते, क्योंकि ये एक संदेश पूरे देश में जा रहा है कि हमारे देश में आज न्यायिक व्यवस्था का क्या हाल है, क्या रूल ऑफ लॉ का हाल है। और कहीं पर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब ये कहने लगी है कि कुछ केसेस तो पॉलिटिकल केसेस हैं, राजनीतिक केसेस हैं, उस पर रवैया कुछ अलग ही अपनाया जाए, चाहे वो बाबरी मस्जिद का हो या ज्ञानव्यापी का मामला हो। लेकिन ऐसे केस में भी हम देख रहे हैं कि कोर्ट का ये रवैया है तो बहुत चिंता की बात हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा
कि आज हमारे देश में जिस तरीके से आवाज उठाते हैं जो लोग, उन पर जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें उसे क्रश किया जा रहा है प्रोटेस्ट को, वो आज किसी कानून के तहत भी नहीं किया जा रहा। वृंदा ने भी कहा था रूल ऑफ लॉ की जगह रूल बाय लॉ। तो शाहरुख ने उस बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि मतलब जो कानून बने हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, उन कानूनों के तहत काम करने की बजाय उन कानूनों का इस्तेमाल करके जो लोग आवाज उठा रहे हैं अन्याय के खिलाफ, उनको जगह पे टिकाया जा रहा है, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। और जो डिसेंट है, जो प्रोटेस्ट है, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उसे बंद किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरा जो हमारी डिसेंट का, प्रोटेस्ट का जो मामला है और अधिकार है, वो भी लगता है कि अब कहीं भिन्न भिन्न हो गया है। अधिकार अलग हैं, अलग लोगों के लिए, अलग समुदाय के लिए। तो अगर धर्म संसद होती है तो वहां पर लोगों को अधिकार है कि वो अपनी बात भी रखें, और वो अधिकार है इकट्ठे होने का, असेंबली का, आर्टिकल 19 का को यूज करने का अधिकार है। लेकिन कहीं पर अगर लोग न्याय की बात कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि इस केस में रेसलर्स कर रहे हैं, तो वहां पर यूएपीए जैसे कानून का इस्तेमाल होगा, पुलिस एक्शन होगा, वायलेंस होगी, कम्युनल वायलेंस तक भी होती है इस तरीके के जो प्रोटेस्ट है उनको बंद कराने के लिए। तो शाहरुख ने यही कह के बात रखी कि आज ये भी एक मामला बन गया है देश में, और उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि शायद एक मानसिकता बनाई जा रही है कि गलत काम करने वाले, महिलाओं पर शोषण करने वाले एक ही समुदाय से आ रहे हैं, मुस्लिम समाज से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। और यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, हिंदू हैं, तो वो चाहे महिलाएं बैठ के, एक नाबालिग बैठ के इतनी स्पष्ट तरीके से शिकायत करके इतने जोर से दम से बैठे हैं, लेकिन जूं तक नहीं रेंग रही, नहीं लग रहा कि उस पर एक्शन करने की जरूरत है। और कहीं और पर बिना किसी कारण से भी चीजों को बनाया जाता है, फ्रेम किया जाता है। तो ये पूरा जो परिप्रेक्ष्य है, इसे जब तक हम समझेंगे नहीं, इस केस में भी आगे क्या होता है, किस तरह से होता है, संस्थाएं कैसे काम करती हैं, शायद हम उसे नहीं समझ पाएंगे, और उसके जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज भी हम एक सोचे समझे तरीके से नहीं उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख आपका। May I just make one very quick clarification, Anjali? I wanted to say that this graded right to dissent, what I meant to say was that I think the state deploys different kinds of violence to deal with different communities. With CAA and RC, it was law as violence, the deployment of UAPA. With the farmers' protest, it was both police and political violence. Similarly, with the wrestlers' protest, and also social violence. In CA, there's also communal violence, but I'm suggesting that they deploy different forms of violence to deal with different people, and we need to realize that, and we need to also, do something about that. There's not been fortunately any UAPA cases yet on the wrestlers. जी, तो शाहरुख कह रही हैं कि वो क्लैरिफाई ये करना चाह रही हैं कि ग्रेडेड डिसेंट जो की वो बात कर रही हैं, वो कह रही है कि जो पुलिस की तरफ से एक्शन आ रहा है वो बहुत अलग अलग तरीके का है। तो सीएए का प्रोटेस्ट, जहां पर मुस्लिम समाज के ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखी, वहां पर तुरंत यूएपीए टेरर का कानून को इन्वोक कर दिया जाता है। जहां पर फार्मर्स बैठे हैं वहां पर एक अलग तरीके के कानून का इस्तेमाल करके उनके प्रोटेस्ट को तोड़ा जाता है। पुलिस एक्शन होगा, पुलिस वायलेंस होगी, पॉलिटिकल वायलेंस और एक्शन है। और इस केस में हम देख रहे हैं कि सोशल एक्शन, सोशल वायलेंस और पुलिस क्रैकडाउन, इस तरीके की चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। अभी तक यूएपीए का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख. And last but not the least, I'm going to request Bhasha Singh, one of the bravest and one of the most outspoken journalists of our times, who does not pull back any punches where the issue comes of justice. She's always there. Bhasha, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया कि आपने आज हमें ज्वाइन किया. थोड़ी देर से हम आप तक पहुंचे, लेकिन भाषा से हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो आज के माहौल में जो एक बहुत ही जरूरी काम करने की जरूरत थी मीडिया को, मीडिया का क्या रोल हम देख रहे हैं इस पूरे केस में भी, मीडिया का क्या रोल हम देख रहे हैं, इस पर आप रोशनी डालें. भाषा खुद तो मीडिया का हिस्सा होते हुए बिना किसी खौफ के, बिना झिझक के सच्चाई को सामने लाती हैं, पर क्या आप देख रही हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में यही हो रहा है कि हम जिस तरीके का हम महसूस कर रहे हैं कि मीडिया एक बहुत ही अजीब तरीके से इस केस को प्रेजेंट कर रही है, मिस इन्फॉर्मेशन है, लीक्स हैं, सिलेक्टिव लीक्स हैं, आप उसको कैसे देखती हैं और किस तरीके से, क्योंकि मीडिया अपना काम सही नहीं कर रहा, इस तरीके का आज हम माहौल भी हमारे लोकतंत्र में बनता हुआ देख रहे हैं. तो ओवर टू यू भाषा. एंड हम भाषा, आप हिंदी में बात करेंगी जी, तो हम अंग्रेजी में साथ ही ट्रांसलेशन भी करते रहेंगे चैट बॉक्स में, आप वो भी देखिए. मैं एक संक्षिप्त ट्रांसलेशन भी करूंगी अंत में, लेकिन वील डू अ साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन. बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि. और अनहद और NAPM ने आज ये बैठक रखी, वेबिनार रखा, और मुझे लगता है बहुत सी चीजें इससे क्लियर भी हुई. जस्टिस लोकुर, वृंदा और शाहरुख, इन लोगों ने जो पॉइंट्स रखे, मुझे लगता है कि जिस दौर में हम बात कर रहे हैं 2023 में, ये संगोल युग है बेसिकली भारतीय लोकतंत्र का. ये एक संगोल युग है जहां पर हम, जो उन्होंने कहा 28 तारीख को कि ट्रांसफर ऑफ पावर, संगोल राजदंड स्थापित किया गया नई संसद में. तो उस नई संसद की जो सबसे बड़ी तस्वीर थी, जहां पर अर्धनग्न मर्द बैठे हुए थे चारों तरफ से और सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक दे रहे थे, अगर आप देखिए तो उसको सबसे बड़ी जो चुनौती मिली वो महिला पहलवानों से मिली. और उन्होंने बताया कि दरअसल इस संगोल युग को चुनौती देने का काम देश की महिलाएं करेंगी. तो एक तो ये चीज बहुत क्लियर है. मुझे लगता है कि ये जो इस समय रवैया है, और जस्टिस लोकुर से लेके वृंदा और शाहरुख ने जो बिंदु रखे हैं, उससे एक चीज जो बहुत साफ हुई है कि इस समय भारतीय लोकतंत्र के जितने खंबे हैं, जितने अहम खंबे, हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं, हम देश की पुलिस की बात कर रहे हैं जो सीधे रिपोर्ट करती है गृह मंत्री को, हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट की छत्रछाया में बैठे हुए हैं जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का रक्षक है. यहाँ पर मीडिया के तमाम घराने, उनके ब्यूरोज यहाँ पे मौजूद हैं. यानी जो चौथा खंबा है उसका एक सबसे तगड़ा प्रतिनिधित्व देश की राजधानी दिल्ली में है. ये सब कुछ जो घटित हो रहा है, जो इस वेबिनार में रिफ्लेक्ट हुआ, वो कोई सुदूर कहीं बस्तर में, झारखंड में, मणिपुर में नहीं, या उत्तराखंड में नहीं, वो देश की राजधानी में हो रहा है, इसलिए बहुत अहम है. और अब आप देखिए कि इसमें जिस मीडिया की हम बात कर रहे हैं वो भी उसी तरह से नतमस्तक दिखाई देता है जिस तरह से बाकी लोकतंत्र के जो खंबे हैं, जो जुडिशरी बात बात में स्लो मोटो लेती है, जो बाकी खंबे जिनको जिस तरह से काम करना चाहिए वो एक्ट करते हैं, वो तकरीबन इस संगोल युग में नतमस्तक है, क्योंकि उनको पता है कि यह एक साधारण यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा का केस नहीं है. उन्हें पता है कि ये एक राजनीतिक केस है, ये एक पॉलिटिकल केस है, जिसे पूरी पॉलिटिकल पेट्रोनेज ऊपर से मोदी राज की मिली हुई है, क्योंकि उनकी जो फोटो आई नई संसद में बृजभूषण शरण सिंह की, वो भी चमचमाते हुए कुर्ते में थी और जिसको तमाम मीडिया ने छापा. मैं 2-3 चीजों पर ध्यान दिलाना चाहूंगी जिन पे अभी तक चर्चा नहीं हुआ. कि आप देखिए कि अभी तक जो भारतीय मीडिया रहा है, जो कॉर्पोरेट मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है,
ये महिला हिंसा और महिला यौन हिंसा पर बहुत प्रोएक्टिव ढंग से खबरें करता रहा। हमने देखा है कि किस तरह से निर्भया के समय 2012 में मीडिया ने एक पूरा जस्टिस के लिए, न्याय के लिए कैंपेन चलाया। सुबह से शाम तक 24 घंटे इसकी कवरेज थी, लगातार कवरेज थी, लगातार बातचीत थी, लगातार एक डिबेट डिस्कशन में हुआ, और इतना एक पॉलिटिकल प्रेशर और सोशल प्रेशर बना कि जस्टिस वर्मा कमेटी बनी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज वुमेन और सेक्सुअल वायलेंस की तरफ इंटरवेंशन में बढ़ा। लेकिन इस समय 2012 से लेकर 2023 में जो चेंज आया है, वह चेंज यह आया है कि इस समय मीडिया घोषित तौर पर, ऑलमोस्ट अनाउंस, उसे शर्म भी इस बात पे नहीं है, वो एक परसेप्शन बनाने की इंडस्ट्री में तब्दील हो चुका है। और इसके 2-3 उदाहरण जो बहुत मजबूत इस महिला पहलवानों के आंदोलन के समय दिखाई दिए। आपको याद होगा 23 तारीख को, 24 तारीख को जब महिला पहलवान बैठी थी जंतर मंतर पे, महज 1 से 2 दिन बीते थे, एक दिन संभवतः 1 से 1.5 दिन, कि खबर आई कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पानी आ रहा है, कितना एसी कितना कूलर में कितना पैसा आ रहा है, कितना खाने में पैसा आ रहा है। और इसे अखबार और मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दोनों ने पब्लिश किया कि फाइनली इतना पैसा, इतने लाख खर्च हो रहे हैं। और महिला पहलवानों और बजरंग पुनिया, इनसे बात भी हो रही थी कि आप इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं। यानी पहला जो काम किया परसेप्शन बनाने का, आप देखिए कि पहली बार जब वो लोग उतरे, तब से जो 3 सवाल लगातार मीडिया पूछ रहा है, मीडिया लोगों को नीचे तक पहुंचा रहा है, वो पहला सवाल कि इसके पीछे पैसा कहाँ से है, कौन लोग हैं। दूसरा सवाल, आप अक्रॉस द केस देखिए, तमाम टीवी चैनल्स उठा के देख लीजिए, जो बड़े टीवी कॉर्पोरेट घराने के चैनल्स हैं, वो पहले दिन से चला रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति है, कोट अनकोट राजनीति। और ये राजनीति बहुत बुरी बात है। यानी ये एक अवधारणा बनाने की कोशिश हो रही है कि दरअसल इन महिला पहलवानों का मुद्दा असल मुद्दा नहीं है, इसके पीछे हरियाणा की कांग्रेस है, इसके पीछे हरियाणा का यह नेता है, हरियाणा का वह नेता है, ये सारी चीजें चल रही। और पूरी बेशर्मी के साथ, मतलब इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि सुधीर चौधरी जो तिहाड़ी रहे हैं, जी न्यूज से अभी आज तक में गए हैं अरुण पुरी जी के चैनल की शोभा बढ़ाने के लिए, वो ब्लैक एंड व्हाइट में पूरी नंगई के साथ, कोई शर्म हया करते हुए नहीं, पूरे खुलकर एजेंडा चलाते हैं। और उनके क्रम में तमाम लोग, 1-2 लोगों के नाम लेने से फायदा नहीं, आप देखिएगा कि हर जगह चल रहा है। तो मतलब उनके पास जो टूल किट है, ये टूल किट पहली बार नहीं है, ये टूल किट शाहीन बाग के समय भी था, ये टूल किट किसान आंदोलन के समय भी था, और यह टूल किट महिला पहलवानों के समय भी है। इनको खाली मुश्किल ये है कि महिला पहलवानों का जो मुद्दा है, इससे इनको दिक्कत यह है कि इनका टीआरपी पर भी संकट पड़ता है। इनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे ही लोग भाग जाएं, पूरा निगेटिव नहीं चला सकते हैं। हिंदू बेटियां हैं, आप ये भी ध्यान दीजिए, ये मुसलमान औरतें नहीं हैं, बिरयानी नहीं खा रही हैं, ये किसान नहीं है, खालिस्तानी नहीं कहा जा सकता इनको, तो क्या कहा जा सकता है। अभी दिक्कत है कि वो टर्म भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन टर्म ढूंढने की कोशिश उस फैक्ट्री ने बहुत तगड़ी कर दी। तो एक जो दूसरा चीज इन्होंने की कि राजनीति कर रहे हैं, ये असली मुद्दा नहीं है, इनको सड़क पे नहीं उतरना चाहिए था, और इसके लिए इन्होंने तमाम उपकरण किए, जितने उपकरण कर सकते थे सब किया। और अब आप देखिए जो तीसरा इन्होंने किया है, वह यह किया, जिस समय ये तमाम महिला पहलवान जा रहे थे पूरे दुखी होकर अपने मेडल गंगा में बहाने, बहुत क्रूशियल मोमेंट था ये ये महिला पहलवानों का। उस समय इन्होंने पूरी कोशिश की यह बताने के लिए कि दरअसल ये कितनी छोटी सोच है महिला पहलवानों की, और ये छोटी सोच इसलिए है क्योंकि मेडल तो देश के नाम पर है। आप देखिए सब लोग चला रहे थे कि मेडल विनेश फोगाट का थोड़ो है, ये साक्षी मलिक का थोड़ो है, ये बजरंग पुनिया का थोड़ो है, ये तो देश का मेडल है, तो देश के मेडल के साथ अपमान कैसे कर सकते हैं। और वहां जो बाइट चलाई गई वो बहुत अहम है। मीडिया कहाँ पहुंचा? मीडिया पहुंचा यौन उत्पीड़न के आरोपी दबंग नेता बृजभूषण शरण का बाइट लेने पहुंचा, और वहां बृजभूषण शरण पूरी बेहियाई के साथ कहता है कि ये तो 15-15 रुपए में मेडल मिल जाते हैं जी, कोई बड़ी बात नहीं है।
इनको तो वापस वो करना चाहिए जो पैसे इन्होंने लिए, जो इनको फायदा मिला। और ये बाइट चलती है, सारी जगह चलाई जाती है, लोगों को बताया जाता है कि ये जो महिला पहलवान है ये कितने स्वार्थी। तो आप देखिए कि ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है, मतलब यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, जिस तरह का सेंसिटिव मुद्दा है उसमें डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां पर भी जो टूल किट ऑपरेट करता है वो टूल किट इसी तरह से ऑपरेट करता है। टूल किट ये बताने की कोशिश करता है, इन महिलाओं को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करता है। एक भी जो बड़ा मीडिया घराना है, किसी मीडिया घराने की हिम्मत नहीं होती है, जनवरी से लेकर इस समय हम जून में हैं, वो एक प्रोफाइल पेश करे बृजभूषण शरण का, उसकी अपराधों की लिस्ट बना रखी थी तमाम महिला पहलवानों ने जो जंतर मंतर पे किया था, कि आप उस पर एक स्टोरी चलाएं। मैं कॉर्पोरेट मीडिया की बात कर रही हूँ, बाकी मीडिया घराने जो हैं उन्होंने तो काफी काम किया, काफी मेहनत की, लेकिन जो बड़े बड़े टीवी घराने हैं, जो रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट से लेकर हमारे आपके घर में फ्री में आते हैं, वहां एक जगह आपको बृजभूषण शरण के आपराधिक कारनामों, उसकी पूरी जो राइज है उस पर दिखाई नहीं देती। और तो और आप चलिए, आप डरते हैं वहां पर, क्योंकि अब तो स्मृति ईरानी ने यह भी बता दिया है कि चुटकियों में लोगों की नौकरी, स्ट्रिंगर की नौकरी भी चली जाती है। अमेठी में वो खुल के मीडिया के स्ट्रिंगर को धमकी देती हैं कि तुम्हारे मालिक से मैं बात करूंगी, दैनिक भास्कर से, और दैनिक भास्कर को फोन करती हैं, नहीं करती, लेकिन नौकरी तो बंदे की चली जाती। तो चलिए, आप उससे डर रहे थे, लेकिन एक भी कॉर्पोरेट मीडिया ने इन तमाम महिला पहलवानों के बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में, इनकी माँ के बारे में किसको पता है? विनेश फोगाट की माँ ने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे अपनी बेटी को यहां तक पहुंचाया, साक्षी मलिक की माँ ने कैसे स्ट्रगल किया, अपने घर में पेट्रियार्की से कैसे लड़ी, कोई कहानी, कोई पॉजिटिव स्टोरीज इन महिला पहलवानों के पक्ष में आप नहीं देते हैं। और तीसरा जो काम किया कि जहां पर आप ओपिनियन पीसेस लिखते हैं, जहां आप एडिट लिखते हैं, मैं अखबारों की बात कर रही हूं, अगर आप अखबार उठा के देखें, बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। आज जिस तरह से जस्टिस लोकूर ने कहा, हम सब जानते हैं, वृंदा ने कहा, हम सब जानते हैं, देश का कानून ये बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि किसी भी महिला जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया हो उसको आप ले जाएं उसी इलाके में, उसी के घर में, बृजभूषण शरण सिंह का घर है वो, जहां पर आप सीन रिक्रिएट करने और चीजें ले जाते हैं। लेकिन इस पर कोई बड़ा हंगामा, बड़ी कवरेज, बड़े संपादकीय नहीं लिखे जाते। कोई बड़ा पत्रकार, जो सो कॉल्ड बड़े बड़े एंकर्स हैं, इस पे सोलो शो नहीं करते। तो एक चीज तो बहुत साफ है कि यहाँ पर, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल केस है, यह एक केस ऐसा है जहां पर मोदी सरकार की साख दांव पे लगी हुई है। यह एक ऐसा केस है, ये बताया जाता है कि वो कितने बड़ा, उसके पास कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कितनी कितनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वो चलाता है, यानी उसका जो पावर है वो तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो रसूख है। और देखिए, इंडिया टीवी उसे, उसका इंटरव्यू करता है मई में और पूछता है उसके बारे में सारा डिटेल, एक पॉजिटिव स्टोरी इंडिया टीवी में चलती। और अभी जो 11 जून को हुआ है, आप देखिए 11 जून को वो गोंडा में एक रैली करता है, जहां तमाम लोगों ने बताया वो पूरी गुंडागर्दी के साथ कहता है। और कहता कब है? जब पत्रकार उससे पूछ रहे हैं। अब आप देखिए, इतने पत्रकार हैं, अगर आप ध्यान से देखिए, सारा कॉर्पोरेट मीडिया वहां मौजूद, सारा कॉर्पोरेट मीडिया, सबके टीवी कैमरेज हैं, टीवी कैमरा है वहां। एक पत्रकार की हिम्मत नहीं होती है कि वह यौन उत्पीड़न इस केस के बारे में उससे सवाल पूछ सके। वो पूछते हैं कि आप अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे सर, या आप कैसरगंज से चुनाव लड़ेंगे सर। तो यानी यहां पर भी आप देखिए कि ये जो मीडिया है, एक जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके आगे किस तरह से नतमस्तक होता है, और उसके पक्ष में जिस तरह से खबरें चलती हैं, जहां पर कोई काउंटर नरेटिव, काउंटर उसको करने की हिम्मत नहीं होती। बृजभूषण को आप छोड़ भी दें, पिछले 6 महीनों में केंद्र सरकार के असंख्य मंत्रियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं मोदी जी और अमित शाह की बात नहीं कर रही, बाकी मंत्रियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वहां पर एक जने से हिम्मत नहीं होती है। एक मीनाक्षी लेखी का जरूर वीडियो आता है, वो भी सवाल एक यंग जर्नलिस्ट पूछ रही है, जो एक प्रमुख चैनल की नहीं है,
लेकिन वो जो है आती है और पूछती है और मीनाक्षी लेखी भागने लगती है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए आईपीएल होता है, देयर इज आईपीएल विच इज गोइंग ऑन, आईपीएल की जो कवरेज होती है, मीडिया के तमाम लोग पहुंचे रहते हैं, देयर इज ऑल गुड न्यूज अराउंड इट। लेकिन एक जगह भी लोग पूछने की हिम्मत इवन खिलाड़ियों से नहीं करते हैं, इवन खिलाड़ियों से, कि सर आपके लोग बैठे हुए हैं वहां पर, आपको कुछ कहना है? आप ब्लैक लाइफ मैटर्स में नेल डाउन करके खड़े हुए थे स्टेडियम में, आज आपके देश की बेटियां, देश की खिलाड़ी खड़ी हुई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, डू यू वांट टू कमेंट? नो, दे डोंट हैव दिस मच ऑफ गट्स और अकाउंटेबिलिटी। सो बेसिकली जिस समय में हम बात कर रहे हैं वहां पर एक चीज बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि जब केस, कोई भी मामला रूलिंग क्लास से जुड़ा है, तब ना पुलिस काम करती है, ना सुप्रीम कोर्ट काम करती है, ना हाई कोर्ट सुओ मोटो लेता है, ना ही अखबार और मीडिया उसे एक निष्पक्ष ढंग से, एक सेंसिटिव ढंग से कवर करने के लिए तैयार होता है। और ये पहला मुद्दा नहीं है। आप देखिए 15 अगस्त 2022 को जब बिल्किस के बलात्कारियों को रिहा किया गया, उस समय से ये संगोल युग शुरू हुआ है। उस समय से लेकर अभी तक बीच में आपको डेरा सच्चा के गुरमीत राम रहीम भी दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर आरोप साबित हो चुका है। उसने भी एक हिंदू लड़की से, मुझे शर्म आती है बोलने में बार बार ये हिंदू मुसलमान लड़की, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी हिंदू लड़की के नाम पर सारा खेल इस समय हमारे सामने होगा। गुरमीत राम रहीम ने किसी और का बलात्कार और हत्या नहीं की थी, एक हिंदू लड़की की थी, लेकिन उसे चुनाव जीतने के लिए भाजपा सरकार जब पैरोल पे छोड़ती है तब कहीं से कोई सवाल नहीं उठता। तो ये जो एक प्रेसिडेंस बना हुआ है, धीरे धीरे प्रेसिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि जब आरोपी, चाहे वो बिल्किस का बलात्कारी हो या गुरमीत राम रहीम हो, कुलदीप सेंगर हो या अनगिनत नाम आप जोड़ लीजिए, और इस समय ये जो यौन शोषण का आरोपी बृजभूषण है, ये तो सबसे कद्दावर नेता है क्योंकि ये तो एक टीवी चैनल के सामने एडमिट कर चुका है कि हाँ मुझे गुस्सा चढ़ा और मैंने गोली मारी और हत्या कर दी, और तब भी वो आजाद घूम रहा है। तो ये एक चीज दिखाई देती है कि यहां पर आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने, आप सवाल पूछने, आप एक मीडिया में जस्टिस के लिए कैंपेन चलाने, जस्टिस फॉर जेसिका कैंपेन चला था ना, सिविल सोसाइटी और मीडिया उसमें पार्टनर था। निर्भया एक कैंपेन चला था जिसमें मीडिया एक पार्टनर था। लेकिन ये सारी चीजें इस समय आपको दिखाई नहीं देती। और वहीं दूसरी तरफ ठीक इसी समय, ठीक जब ये चल रहा है, जब महिला पहलवान बैठी हुई हैं, तब मीडिया के प्राइम टाइम में केरला स्टोरी डिस्कस होती है। उसी समय मीडिया में अभी जो हाल में एक घटना आई है जिसमें लाइव टेलीकास्ट में घूसेबाजी हुई है, वो 72 हूरों पर हुई, वो भी एक फिल्म आ रही है जो प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो यानी डिबेट डिस्कशन में हिंदू महिला, हिंदू औरत का गौरव तभी आता है मीडिया के लिए जब अपराधी मुसलमान है, और वहां पे साबित कर सकते हैं कि आप लव जिहाद है, उसने इतने टुकड़ों में काटा, इतने पीसेस में काटा। यहां पर दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि मीडिया का जो प्रोमिनेंट फेस है वो निगेटिव कैंपेन नहीं, लेकिन उसके प्रति साइलेंस है। जो साइलेंस उसका 28 तारीख को सबसे ज्यादा वोकल था, जब संगोल युग शुरू हो रहा था, मोदी जी इनॉग्रेट कर रहे थे नई संसद को। क्योंकि ठीक उसी समय दूसरी तस्वीर आई जिसको इंटरनेशनल तमाम मीडिया घरानों ने बराबर की तवज्जो दी कि एक तरफ संगोल युग है और एक तरफ महिला पहलवान है जो लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़क पर पहलवानी कर रही है। ये तस्वीर है। तो आप देखिए कि ये जो कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन इसी में जो तमाम छोटे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो जन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिफरेंट न्यूज समूह हैं, आप देखिए कि वो ठीक वही भूमिका और उससे बढ़कर भूमिका उन्होंने निभाई, खबरें देने की, कवरेज करने की। क्योंकि अगर 28 मई को जिस तरह से पुलिस ने बर्बर रवैया अख्तियार किया, अगर उसकी फोटो एविडेंस नहीं होते हमारे पास, तो शायद इस तरह से आउटरेज जो हुआ, इस तरह से जो गुस्सा चढ़ा,
वो एक प्रमाण हुआ कि पुलिस किस तरह से पीट रही है विनेश को, साक्षी को, और घसीट के ले जा रही है। ये भी एक मीडिया का दूसरा हिस्सा कर रहा है, जो जिम्मेदार हिस्सा है, और वो काफी उसकी पहुंच और पूछ, उसका जो दबाव है, धीरे धीरे देखिए कि 2019 के बाद से, खास तौर से 2019 ऑनवर्ड्स, एक ये क्रम दिखाई दिया है कि ये सेक्शन जो मीडिया का है ये पावरफुल है, पावरफुल हुआ है, इसने साख अर्जित की है, और इसकी साख और इसकी जो व्यूअरशिप है उसके दबाव में जो कॉर्पोरेट मीडिया है उसको बहुत मजबूरी में रोते धोते थोड़ी बहुत कवरेज करनी पड़ती है तमाम इन सवालों की। इनको पूरी तरह से आप निगेट नहीं कर पाए, महिला पहलवानों को पूरी तरह से निगेट करने में मीडिया का ये सेक्शन सफल नहीं हो पाया। तो एक चीज जो मुझे अंत में कहनी है कि दरअसल ये डेमोक्रेसी का एक टेस्ट केस है। संगोल युग में महिलाओं का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, अल्पसंख्यकों का क्या होगा, ये तकरीबन सामने है। इस समय महिला पहलवानों के साथ एक सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि जिस तरह से फेक इंडस्ट्री, फेक न्यूज इंडस्ट्री, यहाँ पे मैं खाली एक चीज जिक्र करूंगी कि 5 जून को जिस तरह से साक्षी मलिक को, क्योंकि फेक न्यूज का प्रचार प्रसार जबरदस्त महिला पहलवानों के मामले में भी है, हम सब तक पहुंचा कि महिला पहलवानों ने समझौता कर लिया, महिला पहलवान मिलने चली गई सबसे धोखा देकर, और कोई डील हो गई है जब वो अनुराग ठाकुर से मिलने गई थी। आप देखिए कि 5 जून को साक्षी मलिक को बकायदा ट्वीट करके बोलना पड़ा कि ये फर्जी खबर चलाई जा रही है। ध्यान दीजिए, ये आलम है इस समय फर्जी खबरों का, क्योंकि ये खबर ANI से चलती। और इससे पहले जिसका जिक्र हुआ बार बार कि जो नाबालिग महिला पहलवान है उसको लेकर पहले ANI की जो खबर चली, वो भी पता चलता है कि किस तरह से टूल किट ऑपरेट कर रहा है। ANI की खबर चली जिसमें शुद्ध रूप से कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने बताया है कि महिला पहलवान के जो पिता हैं वो अपना केस वापस ले रहे हैं, वो केस उस तरह का नहीं बन रहा है, पॉक्सो का एक्ट नहीं लग रहा। ये ANI की खबर। दिल्ली पुलिस ट्वीट करती है और कहती है कि नहीं, ये खबर सही नहीं है, और 1 घंटे के 1.5 घंटे के भीतर दिल्ली पुलिस अपना ट्वीट डिलीट कर दे। यानी इंस्ट्रक्शन ऊपर से बहुत साफ है कि अब ये खबर यही चलेगी कि जो नाबालिग बच्ची है उसके मामले में कुछ प्रेशर इतना डाला जा रहा है, जबकि खबर ये चलाई जानी चाहिए थी, जो आज इस पैनल में लोग कह रहे थे कि कितना दबाव है उस पिता के ऊपर, जो पिता खुद भी कह रहा है कि मेरे को दबाव है, मुझे अपनी परिवार की जिंदगी बचानी है, सब कुछ कह रहा है, लेकिन आप देखिए कि मीडिया रिपोर्टिंग से वो चीज बाहर रहती है। मीडिया रिपोर्टिंग में यही चलता है कि समझौता हो गया, डील हो गई, फ्लैश न्यूज है। ये जो साजिशें हैं, मुझे लगता है कि ये बता रही हैं कि लोकतंत्र के तमाम खंबे जहां से हमें न्याय मिलने की उम्मीद है, ये बहुत दुखद घड़ी भी है कि तमाम खंबे तकरीबन दंडवत हैं। लेकिन इसी बीच जो ये एक आशा की चीज दिखाई देती है कि तमाम दूसरे ढंग की रिपोर्टिंग करने वाले लोग, नौजवान, तमाम सीनियर जो लोग हैं वो इस पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और अंत इस बात से मैं करना चाहूंगी कि जिस तरह से लोकतंत्र को बचाने की जो ये लड़ाई है, इसमें किसान और पहलवान मिले हैं, ये एक बहुत बड़ी आशा का संचार करता है, क्योंकि इसने इस खबर को मरने नहीं दिया। मेरा मानना है कि अगर पहलवानों के साथ किसानों की शक्ति ना जुड़ी होती तो जिस तरह से टूल किट चल रहा था, जिस तरह से दुष्प्रचार की इंडस्ट्री चल रही थी, शायद महिला पहलवानों की लड़ाई और ज्यादा मुश्किल होती। अभी कम से कम उनको पता है, और क्योंकि ये किसान मजे हुए किसान है, इन्हें पता है कि कैसे डील करना है, कैसे मीडिया खबरें चलाता है और कैसे हमें अपनी खबर चलाना है। तो ये एक आशा की किरण यहाँ पर है कि उन्हें पता है कि खबर को कैसे बिकने नहीं देना है, खबर और फेक न्यूज का हम काउंटर कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर है कि संगोल युग जो है, संगोल युग से लड़ने की ताकतें कौन होंगी, जो फासिस्ट स्टेट में तब्दील हो रहा है, जहां डिसेंट की कोई मायने नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मायने नहीं, फंडामेंटल राइट्स का कोई मायने नहीं, वहां महिला पहलवान ये दिखा रही हैं कि सड़क पर पहलवानी करके ही लोकतंत्र को बचाया जा सकता है और मीडिया को एक सबक भी सिखाया जा सकता है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाषा।
Thank you so very much. I think Amrita has provided a very detailed translation into English of everything that Bhasha has said. Bhasha, you have coined a new term for us right now, Sengol Yug, or the Sengol era. And where you said that all pillars of democracy stand supported. And unfortunately, what we've heard today, you've captured it so beautifully in the context of the media, but it is true. We are seeing how institutions of accountability, whether it is the police or it is the judiciary, are letting people down. This is a case which is highly political in nature because of the way it has unfolded. All of us can see a very politically powerful person is at the center of this case, where there are allegations, such grave allegations against him, and yet the entire system seems to be conspiring, almost as it would seem, to citizens, and that is what has shaken in the country. That, you know, where women were in a place where typically we see that, you know, we like to keep the names and identities of survivors, you know, we like to keep their identities anonymous. They are being forced, in a sense, because institutions are letting them down, to come to the streets, to identify themselves and say, I have been violated, I have been sexually harassed, and take action, and yet nothing seems to happen. And like you said, the silence of the media in this case, where it should have spoken up, and the kind of things that it should have spoken up about, is deafening. Because in our democracy, this is going to be one of the most, you know, one of the darkest chapters, where you know, women are coming out saying that this is happening. There is total silence from institutions, and the media has failed to play its role. It has, like you said, tried at every stage, most of the media, and of course you said that there are exceptions, and we need to acknowledge that there are some media houses on social platforms who are still doing their job and bringing out the truth. But otherwise, by and large, the mainstream media seems to be totally failing the people, the women, the restless of this country, because they are still trying to bring out the positive stories on Brijbhushan Sharan Singh. They are trying to portray, they are trying to spread misinformation, to confound, confuse the issue. And what we are seeing really is a miscarriage of justice, as far as at least the investigation is concerned, and what we can see till now. And like you said, Bhasha, that this is going to be a test case for our democracy, because we are going to I think for a lot of people, and today the kind of attendance that we had even in this discussion, it shows how concerned people are about what is happening. This sends out a very clear signal to people about where we stand in our democracy, what is the rule of law, what do we expect from our institutions that are supposed to uphold democracy, that are supposed to uphold our fundamental rights, and from the media also, of course, that is supposed to show the mirror and hold the powerful to account, and how it is failing us today. So thank you very much. Thank you, Bhasha. Thank you, Shahrukh. Thank you, Vrinda and Justice Lokur, for joining us today for such a rich discussion. It has gone on for longer than we expected, but I think that every point that was made is so significant, and it has been such an enriching discussion. Thank you very much on behalf of Anhad and NAPM. Would Shabnam like to say anything about